एक बार वॉइस चेक कर दीजिए बेटा, आवाज क्लियर है? हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला, वेलकम टू आवर महा रिवीजन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। कैसे हो सब लोग? जितने लोग लाइव में है एक बार आपकी एंड से आवाज कंफर्मेशन कर दीजिए, ऑडियो वीडियो को कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। जल्दी से जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। आज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स का पूरा महा रिवीजन करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट्स, पूरा फार्मूलास, एक हाई एंड से पूरा फार्मूलास हमने डिस्कस करेंगे। सब कुछ ठीक है आपसे? एवरीबडी इज रेडी माय डियर? यस यस, या नाउ विल स्टार्ट द सेशन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे some of the topics here. So the topics that I am going to discuss, major topics, I am going to discuss error analysis. In error analysis, what are the important topic? Okay, and after the error analysis, we are going for the measuring instruments. We are going for measuring instruments. Okay, and after the measuring instruments, we'll start measurement of bridges. Bridges में हम डिस्कस करेंगे what are the majorly DC and AC bridges my dear, and after that we are going for measurement of power and energy measurement, and last में we discuss करेगा electronic measurements my dear. ओके ना, लास्ट में we discuss करेगा electronic measurements. तो ये पूरा सेशन जस्ट रिवीजन सेशन है, प्रॉब्लम्स कम डिस्कस करूंगा क्योंकि पूरा प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किया हूं। मेजरमेंट्स का पूरा प्रॉब्लम्स मैंने माराथन सेशंस में क्या बोलते हैं, वन शॉट सीरीज में, एंड पूरा यूट्यूब क्रैश कोर्स भी है, अवेलेबल है आपको। तो आज मैंने शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्टकट्स, फार्मूला सीरीज में डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से जल्द से जितना लोग लाइव में है मुझे एक बार हैश रेडी कर दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक माय डियर। आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक, एरर एनालिसिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। एवरी ईयर हर साल हमको एक क्वेश्चन आ रहा है। जो कुछ भी पेपर हो, इलेक्ट्रिकल पेपर हो और इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर हो, आपको एवरी ईयर आपको एक क्वेश्चन आ रहे हैं। so that may be based upon the combination of quantities, or that may be combination of sum of quantities, combination of product of quantities. okay beta, चल। so first of all, ये तो थोड़ा theoretical topic है। मैं theoretical topic को just in a single brief I will give an idea. okay, so basically errors can be classified into three categories. One is a gross error, other one is a systematic error, other one is a random error my dear. okay, so most important here is systematic error. Of course gross errors are happening for the due to the mistakes of the human beings. okay, systematic errors में हमको तीन categories है: instrumental errors, environmental errors and observational error. Instrumental errors are most important. Loading effect my dear, misuse of instruments and inherent shortcomings of instrument. मैं एक अच्छा example देता हूँ। सर कहने कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को important बता दी प्लीज। राहुल मेहता, राहुल मीना, मैं बोल रहा हूं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कुछ है वही ऑर्डर में मैं जा रहा हूं। तो आज का क्लास आप आराम से देख लो। जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही एक्सप्लेन कर रहा हूं इधर। तो माय डियर, लोडिंग इफेक्ट कम्स अंडर विच इंस्ट्रूमेंट, विच एरर? लोडिंग इफेक्ट कम्स अंडर एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अ पार्ट ऑफ ए सिस्टमेटिक एरर। लोडिंग इफेक्ट बोलो तो क्या है? हमने जो कुछ मीटर यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज और मेजरमेंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हमने मीटर यूज करे ना, वो मीटर का रेसिस्टेंस कितना होना है? मीटर का रेसिस्टेंस इनफिनिट होना है, लेकिन मीटर का रेसिस्टेंस इनफिनिट पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, हमने थोड़ा सा एरर आएगा। सो मेजरमेंट वैल्यू वॉट एवर दैट यू आर मेजरिंग, दैट डेफिनेट विल बी लेसर देन द ट्रू वैल्यू माय डियर। ओके, सो इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आने की चांस है। एंड इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स बोले तो क्या है? फॉर एग्जांपल आपने पीएमएमसी यूज कर रहे, पीएमएमसी में आपके पास स्प्रिंग है, पीएमएमसी में एक मैग्नेट है। ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, दैट मींस आप बहुत साल तक यही इंस्ट्रूमेंट यूज करें तो क्या होगा, वो स्प्रिंग का स्टिफनेस जो कुछ है ना, वो स्टिफनेस कम हो जाएगा, वो स्टिफनेस लूज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, टॉर्क में थोड़ा डिविएशन आएगा।
समझ में आपको? तो ये पूरा कम्स अंडर शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, सो इतना बस है, ये पूरा आप बेसिक थ्योरी पॉइंट्स है, दीज ऑल आर. सो दिस थ्योरी पॉइंट्स नॉट मच मैंडेटरी, बट दिस डिविएशंस दिस आर आल्सो नॉट सो इम्पोर्टेंट. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, दिस वन गारंटीड एक्यूरेसी एरर, लिमिटिंग एरर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, परसेंटेज ऑफ गारंटीड एक्यूरेसी एरर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर. अगर आपके पास कोई ना कोई मीटर है, अगर आपके पास कोई ना कोई मीटर है, सो whenever you are purchasing a meter, suppose a full scale value ये है, suppose this is 0 to 100 volts full scale value है, so guaranteed accuracy error is always given by the manufacturer beta. So first point, percent it is always constant, it is fixed by the manufacturer. Suppose if I am saying 2% of guaranteed accuracy error, that means what? ये instrument whatever may be the condition that you are using beta, इसमें 2% एरर होगा. कब होगा ये एरर? फुल स्केल वैल्यू के ऊपर होगा. फुल स्केल वैल्यू के ऊपर 2% गारंटीड एक्यूरेसी एरर होगा. समझ गया आपको? सो 2% ऑफ 100 वोल्ट्स बोलो तो कितना बेटा? 2/100 इंटू 100, दैट मीन्स 2 वोल्ट्स का एरर आएगा. दैट मीन्स अगर ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके अगर आपने 100 वोल्ट्स मेजरमेंट करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको कितना एरर आएगा? 100 वोल्ट्स प्लस और माइनस 2 वोल्ट्स आएगा. That means either 98 volts to 102 volts आने की चांस है आपके पास. ओके my dear, so इसको हम बोलते हैं guaranteed accuracy error बोलते हैं. 3 important points are there related to guaranteed accuracy error. First point, guaranteed accuracy error is always fixed and constant. Guaranteed accuracy error is given by the manufacturer. Guaranteed accuracy error is always with respect to full scale value. Is it clear for all of you? All of you clear my dear? चटर्जी, एवरीबॉडी, जितने लोग सेशन को देख रहे, everybody clear? Yes. So this guaranteed accuracy error will be given by the manufacturer, but by using this particular instrument, अगर आपने you are measuring suppose 20 volts, then क्या होगा? That error is called percentage of limiting error. क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट यूज करके अगर आपने लेस देन फुल स्केल वैल्यू मेजरमेंट करना चाहते हो, उसी समय क्या होगा? उसी समय आपको एरर आ जाएगा, न्यू एरर आएगा. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लिमिटिंग एरर यूज करते हैं. लिमिटिंग एरर यूज करते हैं. सी, if you see what is a limiting error, how to calculate this limiting error, I will explain in this way how to calculate the limiting error. See here, this is our meter 0 to 100 volts and it is having plus or minus 2% guaranteed accuracy error, and I am using, by using this instrument, a measurement of 20 volts. Then what is the limiting error? उसको कैसे यूज करना है? देखो, the guaranteed accuracy error कितना है? Guaranteed accuracy error is equal to 2% of 100 volts. So that is what we call as 2 volts, and उसको हम बोलते हैं limiting error भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? Limiting error भी बोलते हैं. इस वैल्यू को हमने limiting error बोलते हैं, 2 volts को. So suppose for a measurement of 20 volts, अगर आपने for 20 volts measurement करना चाहते हो, so for a measurement of 20 volts, so what is the percentage of limiting error my dear? So percentage of limiting error कितना होगा? ये इंस्ट्रूमेंट which is having 2 volts, उसको यूज करके you are going to measure the 20 volts. Okay, so that means percentage of error होगा 10% होगा. You understand? So the percentage of limiting error कितना हो गया? 10% हो गया. So 10% of that 20 volts, that means how much? 10/100 of 20, so that will become again 2 volts na. So have you observed the limiting error will be same? Limiting error is same, so आपको कितना आ गया? 10% हो गया. And suppose by using the same instrument, अगर आपने मेजरमेंट करना चाहते हो 70 volts, suppose if you are planning to measure for a 70 volts, ये कितना होगा for measurement of 70 volts? देखो ध्यान से. So
for a measurement of 70 volts. How many of your instrumentation students here, my dear? So for a measurement of 70 volts, percentage of limiting error कितना होगा? Percentage of limiting error कैसा calculate करना? 2 divided by 70 into 100. So that is 100, 200 by 70. So कितना होगा? 20 by 7. 20 by 7 बोलो तो around 2 point something आएगा. 20 by 7 बोलो तो कितना आएगा बेटा? एक बार कैलकुलेट करके बताइए. कैलकुलेट करके बताइए. कैलसी यूज करो बेटा फटाफट. So 20 by 7. 20 divided by 7 कितना होगा? So that is going to become 2.85 percentage होगा. Have you observed the percentage of limiting error is reducing? So 2.85 हो गया. All of you got it? 2.85 you got it? So 2.85% of 2.85% of 70 volts कितना होगा? एक बार चेक करो. 2.85 into 70 divided by 100 करो. आपको लिमिटिंग एरर कितना आ रहा है? 2 volts आ रहा है. So with this you are getting 2.85% here, and here you are getting 10%. That means what? As you are going towards the guaranteed, towards the full scale value, the percentage of limiting error is increasing or decreasing? जल्दी बताइए बेटा. अगर आपने towards the full scale value measurement करना चाहते हो, percentage of limiting error decrease हो रहा है और increase हो रहा है? वेरी गुड. परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर डिक्रीज हो रहे. अगर आपने फार अवे फ्रॉम द फुल स्केल वैल्यू जा रहे, उसी समय क्या होगा? इफ यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द फुल स्केल वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज ऑफ लिमिटिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 10 वोल्ट्स, इफ यू आर टेकिंग फॉर 10 वोल्ट्स, ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल फॉर ए मेजरमेंट ऑफ 10 वोल्ट्स दिख रहा है आपको? तो फॉर ए मेजरमेंट ऑफ 10 वोल्ट, सपोज इफ आई एम टेकिंग फॉर ए मेजरमेंट ऑफ 10 वोल्ट्स, क्या होगा? That will be percentage of limiting error will be क्या होगा? So 2 by 10 into 100. That means 20% आ रहा है. So 20% of 10 volts 2 volts होगा. That means ये 20% हो गया. So what are the conclusions I can give, my dear, here? What are the conclusions I can give? So what are the conclusions I can give? First conclusion, most important conclusions. Please note down, my dear. ये conclusions बहुत important है बच्चों. Please note down. What are the conclusions I can give? Conclusions are: first, limiting error is constant, but percentage of limiting error is variable. Am I right or not? Limiting error is constant, but percentage of limiting error is variable. Next, second point, towards full scale value, the percentage of limiting error increases or decreases? Decreases. Third point, away from full scale value, the percentage of limiting error increases. All of you clear मेरे दोस्तों? Please note down. This is the most important point, my dear. जल्दी. All of you clear मेरे दोस्तों? Please follow this session accurately. जितने कॉन्सेप्ट्स मैं आज आपको 3 घंटे और 3.5 घंटे में एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में यूज होगा. या पीडीएफ मिल जाएगा सर? मिल जाएगा. कल मैं सीओए क्लास लिया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा था मैंने, लेकिन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर आपको ईसी बच्चों के लिए है. तो ईसी बच्चों के लिए मैंने पूरा पीडीएफ दिया हूं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर. सिमिलरली आपको भी मिलेगा. ओके, चल. And full scale value guarantee accuracy also written. Percentage of guarantee accuracy उसके बारे में भी मैंने बताया. चल. Now next we are going for the measuring instruments, my dear. So basic instruments में measuring instruments को जा रहा हूँ. So measuring instruments का हमको क्या क्या आएगा?
So we are having a big list of instruments actually. Most frequently asked instruments are PMMC, moving iron, PMMC, moving iron. Next, dynamometer, next, energy meter, next, electrostatic voltmeter, next, thermal instruments. ये पूरा लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स है बेटा, ये पूरा लिस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें आपको डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ पीएमएमसी. पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं क्या सर वो फॉर्मूला याद ही हो गया आपकी वजह से बिना. थैंक यू कॉस्मस, वेरी गुड. या ऑलरेडी जो कुछ प्रीवियसली मैंने बताया ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ बिकॉज टाइम कम है, आज बहुत सारा सेशंस है आपके लिए. तो प्लीज फॉलो ऑल द सेशंस ऑफ गेट वाला, आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा. तो जितने लोग सेशंस को देख रहे हैं इधर बातचीत ऐसा आराम से, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट द वैल्यूएबल टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स. वी नो व्हाट एक्चुअली वी वांट टू गिव. हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. ऑलरेडी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत सारा डिस्कस किया हूं मैंने. you can follow super 10 series, you can follow super 30 series. yes or not? मेरा पूरा लेक्चर्स है आपको. मेजरमेंट्स का यूट्यूब क्रैश कोर्स है, मेजरमेंट्स का वन शॉट सीरीज भी है. ओके, इधर केवल कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करना चाहता हूं सो दैट वो कॉन्सेप्ट्स आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते. सो पीएमएमसी का फुल फॉर्म है, एक परमानेंट मैग्नेट रहेगा एंड एक मूविंग कॉइल रहेगा. दैट इज अ फंडामेंटल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. सी दिस मैग्नेट इज मेड बाय द मटेरियल ऑलनिको. ये परमानेंट मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ आएगा? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेट आएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलो तो क्या है? एक कॉइल रहेगा, वो कॉइल को हमने करंट देने से क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा. वो कॉइल इटसेल्फ एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट, उसको हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं और टेम्पररी मैग्नेट भी बोल सकते हैं. ये परमानेंट मैग्नेट है, क्योंकि अगर करंट दिया उसी समय उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. अगर करंट जीरो है तो उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा. तो इसलिए हमने उसको वीक मैग्नेट बोलते हैं. ये परमानेंट मैग्नेट है, एक ऑलनिको सॉलिड मैग्नेट है उसमें अंदर. तो इसलिए परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. अगर आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इफेक्टिवली मोर. सो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक डैम्पिंग टॉर्क चाहिए. ये डैम्पिंग टॉर्क के लिए क्या मैकेनिज्म यूज करते हैं इसमें? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डैम्पिंग मैकेनिज्म वी आर यूजिंग फॉर द पीएमएमसी? एनीबॉडी इन द लाइव सेशन? जितने लोग देख रहे हैं उसमें एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आने की चांस है. जितने लोग सेशन को देख रहे हैं वहां से एक आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में पीएमएमसी में 3 टॉर्क्स रहते हैं बेटा. 3 टॉर्क्स. फर्स्ट वन इज द डिफ्लेक्शन टॉर्क माय डियर, सेकंड वन इज द कंट्रोलिंग टॉर्क एंड द अदर वन इज द डैम्पिंग टॉर्क माय डियर. ओके, सो डिफ्लेक्शन टॉर्क इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस करंट माय डियर, V versus I, because of the current passing through the spring and because of the magnetic flux. इसके दोनों के बीच में डिफ्लेक्शन टॉर्क होगा. and controlling torque is because of the spring my dear, because of the spring. so deflection torque कैसा होगा? एक moving coil है. so this coil is attached to a aluminum frame and this aluminum frame is attached to a cylindrical iron structure, so that the radial flux is going to happen and this particular moving coil is suspended to a spindle and the spindle is connected to the springs. 2 springs है, ये springs series में है. okay, and the spring is a flat ribbon type है. इसके लिए हम क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. वेरी गुड, एक्सेलेंट. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इधर क्वेश्चंस भी आ रहा हूँ, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आने की चांस है, एमएस की भी आने की चांस है. जल्दी बताइए बेटा, स्प्रिंग्स के लिए क्या मटेरियल यूज करते हैं? मैग्नेट के लिए ऑलनिको यूज करते हैं. स्प्रिंग के लिए हमने क्या मटेरियल यूज करते हैं? कोई बता सकते हैं? यस, फास्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल यूज कर सकते बेटा. फास्फोरस ब्रॉन्ज मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग कैसा होना है? स्प्रिंग, वेरी गुड, एक्सेलेंट. स्प्रिंग शुड बी कंडक्टिव बट नॉन मैग्नेटिक होना है. कंडक्टिव नॉन मैग्नेटिक. वो करंट को अलो करना है, करंट को अलो करना है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा परमानेंट मैग्नेट से आना है. हमारा करंट मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट नहीं करना है.
इसलिए the spring should be made by एक phosphorus branch which is conductive in nature but non-magnetic. Please note on this point, conductive, non-magnetic. Okay, हो गया. Next, what is the copper? What is the coil material? Coil material हमने copper use कर रहे. Very good. So copper बोले तो copper को number of tons होगा. So coil is made by copper, my dear, and magnet is made by, दिख रहा है पूरा? Yes. थोड़ा साइड से एडजस्ट देखो बेटा, कल मेरा क्लास में थोड़ा स्लाइड से एडजस्टमेंट डिफरेंट था. ऑल निको है. एंड स्प्रिंग का मटेरियल क्या है? स्प्रिंग का मटेरियल है फास्फोरस ब्रॉन्ज है, फास्फोरस ब्रॉन्ज है. एंड कॉइल का मटेरियल क्या है? कॉइल का मटेरियल है कॉपर है. एंड फ्रेम का मटेरियल क्या है? फ्रेम का मटेरियल एल्यूमिनियम है. दीज ऑल आर मेजर कंपोनेंट्स. एंड दिस पॉइंटर इज आल्सो मेड बाय एल्यूमिनियम. So deflection torque makes the pointer to move like this, and the springs are going to control in the opposite direction. So when the deflection torque and controlling torque both are equal, this particular pointer will be making certain oscillation. ये oscillations को हम बोलते हैं damping. To make that oscillations to die, we need a damping torque. ये damping torque कहाँ से आएगा? ये damping torque is going to come because of eddy current damping mechanism, my dear. मेरा दोस्तों, अगर पीएमएमसी से आपको थ्योरी क्वेश्चन आया है, वो थ्योरी क्वेश्चन से मटेरियल के ऊपर आएगा. एक्सेलेंट 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 रोहित सोनी. थ्योरी क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो एडी करंट डैम्पिंग हम यूज कर रहे हैं. चलो बेटा, सो हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वांट टू राइट हियर. सो पूरा मेरा फॉर्मूलास आपको दिया हूं, एक बार मैंने आपको फॉर्मूलास देना चाहता हूं डिटेल में. सो डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑफ द पीएमएमसी का फॉर्मूला है बिना, वेयर B is the magnetic flux density, वेबर पर मीटर स्क्वायर है. एग्जाम के लिए जरूर आपने रिमेंबर करना है, बहुत सारा टाइम्स आपको ये फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस आया है. आज मैंने क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं. आज अगर क्वेश्चन डिस्कस करें तो बहुत सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नो यूज ऑफ रिवीजन. रिवीजन बोले तो पूरा थियोरेटिकल कंटेंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं. B is a magnetic flux density, I is the current passing through the springs, N is the number of turns, A is the लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कॉइल. ओके माय डियर. सो इसको हिंदी में आपने ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं एग्जाम के लिए, बिना बिना छोड़ के बिना. सो टीडी इज इक्वल टू बिना है. सो दिस इज अवर डिफ्लेक्शन टॉर्क बेटा, प्लीज नोट डाउन. नेक्स्ट उसके बाद है आएगा आपको कंट्रोलिंग टॉर्क आएगा. कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला है केसी थीटा माय डियर. सो केसी इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट माय डियर. So at steady state क्या होगा my dear? At steady state this deflection torque and controlling torque दोनों equal होगा my dear. So Kc theta, so theta is equal to BNA by Kc into I. So theta is proportional to I. One of the most important feature of the PMMC is scale is linear. So these are the points I have written, linear scale. See, in a simplified way I have collected the notes for you. जितने लोग सेशन को देख रहे, उतने लोग ये पर्टिकुलर नोट्स को आपने स्क्रीनशॉट, आप पीडीएफ मिलता है आपको, वो पीडीएफ को पढ़ो, आपको पूरा मेजरमेंट्स का सीरीज का लेक्चर हो जाएगा. ओके, पूरा प्रिपरेशन एक रात में हो सकता है, पूरा प्रिपरेशन एक रात में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो प्रैक्टिस करना है, प्रॉब्लम तो प्रैक्टिस करना है. ओके बेटा, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर हियर, सो हियर theta is proportional to current, but the most important point क्या है बेटा? This particular deflection is responsible for only DC current बेटा. अगर आपने AC करंट दिया क्या होगा? जो एवरेज टॉर्क जो कुछ है वो जीरो बनेगा. Yes or not? That is the reason why PMMC is not suitable for AC measurement. PMMC is the best instrument, accurate instrument, reliable instrument, linear instrument for DC measurements my dear. Okay. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से आपको बहुत सारा फॉर्मूला आने वाला है. देखो व्हाट इज अ फॉर्मूला. अगर आपने सेंसिटिविटी दिया, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बोलते, क्या बोलते हैं? देयर आर टू सेंसिटिविटीज माय डियर. पीएमएमसी डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी को क्या बोलेगा? व्हाट इज द इनपुट? सपोज इफ यू टेक द पीएमएमसी लाइक दिस, पीएमएमसी को इनपुट क्या है? पीएमएमसी को इनपुट है डीसी करंट बेटा, एंड उसका आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट करंट, आउटपुट इज डिफ्लेक्शन थीटा बेटा. इनपुट इज आईडीसी एंड आउटपुट इज द deflection. So what is the sensitivity of the PMMC my dear? So sensitivity of the PMMC क्या होगा? Sensitivity of the PMMC, उसको please note down.
बहुत सारा बच्चे कंफ्यूज होता है, दिस इज थीटा बाई आई माय डियर। सो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी बोलते हैं। उसका यूनिट्स क्या होगा? डिग्री पर माइक्रो एम्पियर हो सकता है, और मिलीमीटर्स बाय माइक्रो एम्पियर्स हो सकता है, और सेंटीमीटर्स बाय माइक्रो एम्पियर्स भी हो सकता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड माय डियर? सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर। नेक्स्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, torque to weight ratio of the instrument. Torque to weight ratio क्या है? If you see the torque to weight ratio, what is the torque to weight ratio? Generally the torque to weight ratio क्या होगा? Torque to weight ratio means if the weight is less, the sensitivity will be more. Which weight here? Can anybody tell me? PMMC को torque to weight ratio ज्यादा होगा और कम होगा? Very good, 1 by full scale deflection. Yeah. Please tell me. PMMC को टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा और लेस होगा? हाई होगा। वाई हाई होगा? वेरी गुड, बिकॉज द मूविंग पार्ट जो कुछ है पॉइंटर, द पॉइंटर इज अल्यूमिनियम मेड, सो उसका वेट कम है। अगर वेट कम है तो क्या होगा? टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा। सो दैट इज अ पॉइंट टॉर्क टू वेट रेशियो। So torque to weight ratio represents another sensitivity. Okay, so what are the advantages? It is used in aeroplanes, aerospace industry, zero hertz frequency measurement, uniform scale. Disadvantage क्या है? It is not suitable for AC media. Okay, चलो. Okay, now most important points I want to tell you. Those are PMMC, अमीटर एंड वोल्टमीटर। उसके लिए मैं बार बार आपको प्रीवियस सेशंस में मैंने फॉर्मूलास दिया हूं, फिर भी इधर और एक टाइम आई एम गोइंग टू गिव द फॉर्मूला। सो इफ यू वांट टू शो पीएमएमसी एज अ अमीटर क्या है, सो दिस इज द मीटर करंट ऐसा IM है, एंड दिस कॉपर वाइंडिंग डेफिनेटली विल बी हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस RM, सो दिस इज माय RM माय डियर। बट अगर आपने उसका रेंज को एक्सटेंशन करना चाहते हो बाय I, क्या करना चाहते हो? करंट रेंज को एक्सटेंशन करना चाहते हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमने एक शंट रेसिस्टेंस को यूज करे बेटा। क्या यूज कर रहे बेटा? एक शंट रेसिस्टेंस को यूज कर रहे। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस आने की चांस है। अरे यार कितना साल क्वेश्चंस आ गया, हाउ मेनी टाइम्स, देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस केम माय डियर। वेरी गुड, एक्सेलेंट। इसके नीचे आएगा एक्सेलेंट, वेरी गुड, क्योंकि शंट नीचे है, शंट नीचे होने से M-1 भी नीचे आएगा। बस सर ये फॉर्मूलास मुझे याद नहीं है सर, एग्जाम में क्या करूं सर, मुझे याद नहीं आ रहा है सर, पूरा टेंशन में हूं सर, पूरा स्ट्रेस में हूं सर, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, क्या करूं? अरे यार आराम से कर सकते हो, इधर फॉर्मूला अप्लाई करो, इधर वोल्टेज एंड इधर वोल्टेज सेम होगा बेटा। सो द करंट हियर IM RM एंड हियर इफ यू टेक दिस ISH, फटाफट फॉर्मूलास को बाय हार्ट करने की फॉर्मूलास को बाय हार्ट करने की स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फॉर्मूलास को बाय हार्ट करने की चाहिए, आपको कुछ प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको एग्जाम में अप्लाई करो। कैसा अप्लाई करना? दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज इक्वल, फटाफट। सो मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं, अगर एग्जाम में भूल गए क्या करना सर, सो VM इज इक्वल टू VSH अप्लाई कर सकते हैं आपको। सो दिस इज IM इंटू RM इज इक्वल टू ISH इंटू RSH अप्लाई कर सकते हैं आपने। सो यहां से आपको RSH का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर RSH माय डियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माय डियर, एग्जाम में पक्का आने वाला क्वेश्चन माय डियर, RSH इज इक्वल टू RM बाय M-1 माय डियर। वेरी क्यों सर ऐसा इजी टेक्निक मैं बोल रहा हूं सर, अमीटर के लिए शंट नीचे है सर, M-1 नीचे आएगा सर, दैट्स इट। ये M क्या है? ये M इज इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर I बाई IM हो गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर I बाई IM हो गया। पक्का आपने क्वेश्चन मिस मत करना। क्वेश्चन ऐसा देता है, ये 0 to 10 माइक्रो एम्पियर्स अमीटर having an internal resistance of 10 ohms is trying to extend its range by 5 amperes, find out the shunt resistance। आराम से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, RSH is equal to RM by M-1। उसको M को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। आपको अभी क्लैरिटी आ गया? जूही चावला, अंजलि कुमारी, अद्वैत शर्मा, नितेश पटनायक,
अवधेश शर्मा, रोहित सोनी, विशाल सोनी, कासमास, सुमुखा प्रधान, सोनू कुमार। हाँ, जितने लोग सेशन को देख रहे पूरा, यस, आई एम एक्सपेक्टिंग इफ यू आर गेटिंग ए क्वेश्चन यू शुड नॉट मिस दिस। ओके, चलो। सिमिलरली इफ यू गो फॉर दी पीएमएमसी वोल्ट मीटर, पीएमएमसी वोल्ट मीटर के डायग्राम क्या है? तो दिस इज हमारा वीएम है एंड इसको सीरीज में एक आरएम है एंड वोल्टेज का रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे? वोल्टेज का रेंज एक्सटेंड करने के लिए हमने एक सीरीज रेसिस्टर कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द सीरीज रेसिस्टेंस माय डियर। ये सीरीज रेसिस्टेंस माय डियर, रिमेंबर मीटर के अंदर हमने कनेक्ट नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वीएम, ओके ना? इफ यू वांट यू कैन टेक दिस एज वीएम। दिस is our VM, okay? So this is our VM and this is our capital V, my dear. Okay, so यहां से भी आपको सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सो हियर सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताइए बेटा, जितने लोग सेशन को देख रहे हैं। वेरी गुड जी चावला। m-1 विल बी कमिंग इन सीरीज। so this RSC is equal to RM into क्या होगा? m-1 सीरीज में आएगा। बस, अरे इतना आराम से फॉर्मूलास को रिमेंबर कर सकते हैं आप, कितना प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। सीरीज रेजिस्टेंस सीरीज में आएगा, m-1 भी सीरीज में आएगा। सो m क्या है बेटा? m इज इक्वल टू कैपिटल V बाई स्मॉल vm बेटा, कैपिटल V बाई स्मॉल। मजा आ गया, मिस मत करना, शुड नॉट मिस दिस टॉपिक्स माय डियर। चलो, next application, this also I want to give an explanation। PMMC का और एक application है, PMMC is used as a rectifier। so PMMC as a combination of rectifier type instrument, उसका हम बोलते हैं rectifier type instrument। so PMMC rectifier प्लस PMMC, ये पूरा मिला के क्या होगा? रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट्स होगा। रेक्टिफायर प्लस PMMC आपको रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट होगा। सर PMMC कैन नॉट मेजर AC, देन हाउ यू आर गोइंग? सर आपके पास रेक्टिफायर है, सो रेक्टिफायर क्या करेगा? AC को DC को कन्वर्ट करेगा, सर नॉट। सो दैट पर्टिकुलर रेक्टिफायर को हम यूज करके हमने PMMC को अटैच करे। इधर भी कुछ फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Two types of instruments are there. One is the half wave rectifier instrument, other one is a full wave rectifier meter. Okay, so basically rectifier type instruments can be used for both AC and DC voltage and current measurements. These instruments consist of a rectifier and a PMMC। देखो बेटा, here most important formulas, these are half wave rectifier। आपको पता है diode conducts in a forward bias, so this is the supply voltage I am giving। the supply voltage is VI is equal to साइनसॉइडल वेवफॉर्म Vm sin ओमेगा t। दिख रहा है आपको? Vi इज इक्वल टू Vm सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड Vm sin ओमेगा t। सो हियर एक फॉरवर्ड रेसिस्टेंस है, दिस डायोड है, इसको PMMC दे रहे हैं। सो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर व्हाट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट के लिए रीडिंग क्या है? इसका फॉर्म फैक्टर इनटू DC वोल्टेज होगा। सो इफ इनपुट इज अ साइनसॉइडल वेव, इसको हम क्या करेंगे? 2.22 इंटू VDC करेंगे। इफ इनपुट इज अ सॉटूथ वेव फॉर्म, रीडिंग ऑफ द रेक्टिफायर इसको 2.3 इंटू VDC करेंगे। यू अंडरस्टैंड? सो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? फुल वेव रेक्टिफायर में आपको एक ब्रिज सर्किट होगा, एक ब्रिज सर्किट, डायोड ब्रिज सर्किट होगा, उसके बाद PMMC आएगा। सो इसके लिए फॉर्म फैक्टर क्या है? 1.11 होगा। सो दैट मीन्स आपने ये बात लिख सकते हैं, sensitivity of DC will be 1.11 times of sensitivity of AC here, whereas sensitivity of DC here is आपको sawtooth को and sinusoidal के लिए आपको रिमेंबर करना है 2.22 आएगा इधर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में, एंड फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होगा? 1.11 आ जाएगा। ओके, चलो, ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल हियर?
आई थिंक ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल ना, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स आपको पता है, यस आपको इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को आपको ये फंडामेंटल्स आपको पता है, फॉर्म फैक्टर क्या है, कैसा होता है, ओके चलो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट कम्स द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट माय डियर। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में बेसिक थिंग्स क्या है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा, इसको क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। वी आर नॉट यूजिंग द परमानेंट मैग्नेट, वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। What we are using, my dear? We are using electromagnet. That means we are having a coil. So we are having a coil. In that coil, when the current is passing, this coil gets energized. A coils get energized, it acts like a magnet. That's why उसको हमने electromagnet बोलते हैं. This is a most important point. PMMC में permanent magnet होगा. Moving iron में magnet is electromagnet type. And जो कुछ iron disc है ना, the disc is movable. So whenever the current passes to this particular coil, a coil fixed है, एक coil में current जाने से क्या होगा, magnetic flux generate होगा, that magnetic flux attracts this moving iron, इसकी वजह से हमको deflection torque आएगा। So here the most important formula, the deflection torque formula. Can anybody type? What is the deflection torque formula for this? बहुत important है, moving iron का deflection torque formula क्या है? Anybody in the class? डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताइए। जितने लोग सेशन को देख रहे हैं मैं उसको पूछ रहा हूं, सेशन इंटरेक्टिव होना है बेटा। डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला बताइए जल्दी। एक्सलेंट, वेरी गुड जूही। डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, 1/2 I square. I will tell you the technique to remember this. I will tell you the technique to remember this, my dear. Moving iron works on the concept of self-inductance. Moving iron works on the concept of self-inductance. Dynamometer works on the concept of mutual inductance. For dynamometer, we are going to get dm by d theta. For moving iron, we are going to get dl by d theta. ये याद रखो, very good. मूविंग आयरन के लिए dl by dt आएगा, डायनामोमीटर के लिए dm by dt आएगा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। सो TC is equal to KC theta. So when you take the steady state, my dear, steady state में क्या होगा, so steady state में ये दोनों को इक्वल करना है, 1/2 I square. So dl by d theta is equal to KC theta, my dear. तो यहाँ से आपको theta proportional to I square आएगा. So theta proportional to I square means theta is proportional to v square also. So scale is non-linear, non-uniform बोल सकते हैं, and most important is it is suitable for AC as well as मजा आ गया, everybody clear? फटाफट non-linear, we should not use the word non-linear बेटा, actually text books में भी mistake होगा, because non-linear नहीं है, linear scale भी होगा. It is actually the scale is like this, my dear, it is going to get like this. So some portion is crowded, some portion is linear, some portion is spacious. So उसको हम बोलते हैं this is a non-uniform scale बोलना है, not linear, हमने non-uniform बोलना है, क्योंकि उसमें linear zone भी है, ये linear zone है, ये spacious zone है, ये crowded zone है, cramped zone है, crowded zone, cramped, linear, spacious, इसमें linear zone भी है लेकिन limited है, overall non-uniform है. So non-linear is not the correct word मेरे दोस्तों, non-uniform. सर इट्स पावर फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट और हाई फ्रीक्वेंसी, बेटा कोई भी पावर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट, वी कैन नॉट गो फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज, वी कैन नॉट गो फॉर हायर फ्रीक्वेंसीज माय डियर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एरर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी एरर, मैं बताता हूं उसको. एट हायर फ्रीक्वेंसीज वी आर गोइंग टू हैव सम एरर्स, ओके, सेम रिपल्सिव टाइप, या सो दीज आर द फॉर्मूलास. हाफ आई स्क्वायर dl by d theta एक फार्मूला है. Next, everything is fine. So does not follow the square law. Very good. Yes. Next, most important point here आपको एक क्वेश्चन आने वाला है. PMMC just like range extension. Yes. PMMC, yes गजेंद्र सिंह, रेंज एक्सटेंशन के लिए इसके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. देखो बेटा,
रेंज एक्सटेंशन के लिए व्हाट इज द डिफरेंस हियर? इन एडिशन टू मीटर, सपोज इफ यू आर यूजिंग एज अ अमीटर, इफ आर यूजिंग एज अ अमीटर, आपके पास क्या होगा? आपके पास इन एडिशन टू मीटर रेसिस्टेंस आपको एक इंडक्टेंस भी होगा, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे। इसके लिए क्या होगा? आपको एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा LM, इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सो डेफिनेटली आपने जो कुछ शंट कॉइल अटैच कर रहे, वो शंट कॉइल के लिए क्या होगा? सो डेफिनेटली आपको शंट कॉइल के लिए RSH एंड LSH होना चाहिए, शंट इंडक्टेंस होना। अगर आपको जो कुछ करंट आ रहा है उसमें, दिस कैन बी AC टाइप एंड DC टाइप माय डियर, ओके। अगर DC टाइप है तो क्या क्या होगा? ये LM एंड LSH का इफेक्ट नहीं हो सकता है, बस सर नॉट। बट द बेसिक कंडीशन क्या है? यू हैव टू चूज द कंपोनेंट सच अ वे द टाइम कांस्टेंट ऑफ द मीटर एंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द शंट बोथ शुड बी सैटिस्फैक्टरी। यू अंडरस्टैंड? टाइम कांस्टेंट ऑफ द मीटर एंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द शंट शुड बी बैलेंस्ड। सो टाइम कांस्टेंट बोलते क्या है? L by R, सो हियर हमको LM by RM एंड दिस शुड बी इक्वल टू LSH by RSH। इसके ऊपर भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस दे सकते हैं। सो क्वेश्चन में भी आस्क्ड हियर, कैलकुलेट द कंपोनेंट्स ऑफ द शंट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द शंट माय डियर? सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द शंट। You may be asking what are the components values of the shunt components. So you may be asking the RSH value and LSH value. Okay, my dear. So this is one of the expected formula. All of you noted, my dear. For DC क्या होगा? For DC we just require a shunt resistance. So shunt resistance is equal to same formula RM by M minus 1 होगा। AM क्या है? I by IM हो जाएगा। पर AC के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते। अगर आपने एक बार RSH कैलकुलेट किया, अगर RSH के बाद RSH RM अवेलेबल है, देन आपने ऑटोमेटिकली शंट कंपोनेंट्स को भी डिस्कस कर सकते। यू अंडरस्टैंड माय डियर? सो यहां एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने की चांस है। सी at every topic you are getting some list of formulas. Am I right or not? If you follow a sequential understanding of the subject, so if you follow a sequential understanding of the subject, a connectivity is there. PMMC में क्या हो रहा है, मूविंग आयरन में क्या हो रहा है, PMMC में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहे, मूविंग आयरन में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहे, PMMC में डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, हियर डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। If you follow a sequential order, then remembering these formulas is not a big thing. Now, but remember when you want to attach it as a series, series में क्या करना है? series में आपने एक definitely you have to attach a series. So इधर एक important point. Suppose if you want to attach a voltmeter, so this is our RM. This is our LM. अरे दोस्तों, this is moving iron voltmeter. तो इसके लिए हम क्या करना है? एक सीरीज रेजिस्टेंस को अटैच करना है। सो दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस आई एम यूजिंग। So this RSC formula, same we can use the formula of that RM into M minus 1. But the most important point here is when you are using this particular for the voltage measurement, definitely you are having some frequency error. What is the frequency error? See, if you see this here, this will be ZM, this will be VM, and this will be V. Yes or not, my dear? So V is equal to I into Z. VM is equal to IM into ZM. So if you take the ratio V by VM, or if you are following, my dear, this is a very rare concept, beta, a rare concept मैं बोल रहा हूँ. So I into Z क्या है इधर? RSC plus RM
plus j omega lm, whereas this one, of course this current and this current will be same, series में है, so this current and this current same, so this is केवल rm plus j omega. So as these two components are same, my dear, so these are going to get cancelled. So if you take the magnitude of this, what I am going to get, my dear, here the magnitude I am going to get as rsc plus rm whole square plus omega lm whole square divided by rm square plus omega lm whole square. All of you understanding, my dear? Is it clear everybody? थोड़ा सा लेंथी डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, लेकिन ये एक्सपेक्ट रेयर टॉपिक्स, these are rare topics. Okay, so here if you see there is one component called W. Have you observed? What is this W, my dear? What is this W, my dear? Can anybody tell me what is this W? This W means 2 pi f. That means frequency of your supply. अरे यार, अगर आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी वैल्यू दे रहे हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, अलग अलग वैल्यू आने की चांस है. Yes or not? That's why this is having a frequency error. अगर आपने ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को हायर फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहे हो, उसी समय क्या होगा, डेफिनेटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आपको डिफरेंट, दैट मीन्स यू आर यूजिंग ए करंट but having different frequency. Suppose I am using current 5 amperes with a 10 hertz frequency and the same 5 amperes with 50 hertz frequency, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आपको अलग अलग वैल्यूज आने की चांसेस है. इसलिए ये फ्रीक्वेंसी एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है, दिस अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैन एनीबॉडी टेल मी? ये फ्रीक्वेंसी एरर को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करना है? व्हाट इज द मेथडोलॉजी, व्हाट इज द टेक्निक इन्वॉल्व्ड फॉर दिस? जल्दी बताइए बेटा. Yes, excellent. Connecting capacitor. Why capacitance? Can anybody tell me? Why capacitance? Can anybody tell me what is the reason for this capacitance? Why we have to add the capacitance? दोस्तों, listen. Actually, we are having this frequency effect because of the coil. This concept is very very important, my dear. As we are getting this frequency error because of the inductance concept, inductance effect को eliminate करने के लिए हमने उसका काउंटर पार्ट लेना है. इंडक्टेंस के काउंटर पार्ट कौन है? कैपेसिटेंस है. इसलिए हम क्या करना है, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है. सो यहाँ we are connecting a parallel capacitor C, my dear. So this is C. So what happens, this C, the frequency component जो कुछ है उसका component को eliminate करेगा. उसका of course if you want you can do it. Okay ना? चलो. So what is the concept now? What is the formula? Please note down that formula. This is very rarely asked question, my dear. The capacitance का value है 0.41 into Lm by the series resistance. Please note down. L by R is a time constant ना, ऐसा remember कर सकते L by R, लेकिन R square होना है. Please note down this formula. It's a very very rarely asked question. Very very rarely asked question, my dear. The series the shunt capacitance, उनको बोलते हैं shunt capacitance. ये shunt capacitance ऐड करने से क्या होगा, frequency error eliminate हो सकता है. Very good, excellent, excellent रोहित सोनी, excellent. मजा आ गया? Clear all of you? So मैंने डिस्कस किया हूं आपके लिए. So this is a moving iron. This is a moving iron
MI अमीटर है डायग्राम, ये मूविंग आयरन अमीटर का है, एंड नेक्स्ट ये है MI वोल्टमीटर। चलो नेक्स्ट, third instrument is the dynamometer, my dear. Very good. The next instrument is a dynamometer, one of the important third instrument. Okay, first one is the PMMC, second one is the moving iron, the third one is the dynamometer. See, in the dynamometer, what are the features? In the dynamometer, what are the features, my dear? एक बार ध्यान से सुनो। डायनामोमीटर इज अ कॉम्बिनेशन, एक्चुअली डायनामोमीटर में कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वी नीड अ मैग्नेट, मैग्नेट के लिए हम लोग क्या मैग्नेट यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। प्लस इसमें भी एक मूविंग कॉइल है, सो इट इज EMMC। दैट मीन्स व्हाट? PMMC से हमने मूविंग कॉइल का कॉन्सेप्ट ले रहे, एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से क्या ले रहे? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या है? मूविंग आयरन में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्सेप्ट है ना, यस, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉन्सेप्ट ले रहे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं डायनामोमीटर को? डायनामोमीटर को ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मूविंग कॉइल, you understand, electromagnet and moving coil, so that is a feature of this particular instrument dynamometer। इसमें 2 coils रहता है, so ये 2 coils के बीच में 2 coils, ये coils को हम current coil बोलते हैं, so these coils are fixed coil, उसको हम current coil भी बोलते हैं। ये current coils के बीच में एक moving coil arrange किया है, इसमें एक spring concept है, when the concept is between these we are going to have the mutual inductance concept। ये दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉन्सेप्ट की वजह से आपको डिफ्लेक्शन टॉर्क आएगा। सो प्लीज नोट डाउन माय डियर द डिफ्लेक्शन टॉर्क फार्मूला। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन टॉर्क फार्मूला, माय डियर? फॉर डायनामोमीटर, the deflection torque is equal to I square dm by d theta. Please remember this concept. You can compare this formula with our moving iron instrument. For moving iron instrument, this is I square dl by d theta, my dear, but here comes 1 by 2. Okay ना, ऐसे याद रख सकते हैं आप। Is it clear मेरे दोस्तों? This is for moving iron, my dear. Moving iron works on the concept of self inductance, my dear, and this is for dynamometer, my dear. Dynamo, it works on the principle of dynamo, M for mutual inductance. Got it? Yeah. So here dynamometer में कुछ adjustments करना है. What are the adjustment? I will tell you. Dynamometer ammeter. See here, dynamometer ammeter. Dynamometer ammeter में क्या है adjustments? देखो, deflection torque is equal to I square into dm by d theta. कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू kc t theta, दोनों को इक्वल करें तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I square, my dear. So it is non-uniform for current measurement. Am I right or not? Scale is non-uniform scale and suitable for AC as well as DC, my dear. Suitable for AC as well as DC. Second, dynamometer voltmeter. ये डायनामोमीटर वोल्टमीटर के फॉर्मूला क्या है? डिफ्लेक्शन टॉर्क I स्क्वायर है ना, सो I स्क्वायर को हमने V बाय आर लिखे तो V बाय आर होना V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर dm by d theta होगा। I is equal to current passing through the moving coil. I can take V by R, so V square by R square, and the deflection torque हो गया, कंट्रोलिंग टॉर्क भी मिल गया आपको। सो यहां से आपको आएगा थीटा इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। मजा आ रहा है बेटा? पूरा एक सिंगल स्ट्रेच में हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे, ध्यान से सुनो। सो इट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म स्केल, एंड इट इज ऑल्सो AC and DC. It is also AC and DC. Am I right or not?
So what is the existing instrument? This was a question asked once upon a time in the gate examination. Which of the following instrument does not exist? Dynamometer type ammeter, dynamometer type voltmeter, dynamometer type wattmeter, moving iron ammeter, moving iron voltmeter, moving iron wattmeter. Which is not existing? Which of the following instrument does not exist, my dear? Which of the following instrument does not exist? Try to understand. PMMC ammeter exist or not? PMMC ammeter exist or not? Yes, sir. PMMC voltmeter exist or not? Yes, sir. PMMC wattmeter, do you have this wattmeter concept with PMMC? No, sir. Next, moving iron ammeter exist or not? Yes, sir. Moving iron voltmeter exist or not? Yes, sir. But moving iron wattmeter, does it exist, my dear? No, sir. मजा आ गया? हाँ? Next, dynamometer, dynamometer type ammeter exist or not? Yes, sir. Dynamometer type voltmeter exist or not? Yes, sir. Dynamometer type wattmeter exist or not? Dynamometer wattmeter exists, sir. मजा आ गया? See here, what is the arrangement we have to do then? This is a dynamometer ammeter हो गया, dynamometer voltmeter हो गया. अभी dynamometer wattmeter कैसा आएगा? एक सेकंड. चल, डायनामोमीटर वाटमीटर के लिए क्या करना है? डायनामोमीटर वाटमीटर के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना है अरेंजमेंट में. व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट? डायनामोमीटर वाटमीटर के लिए फार्मूला में भी एडजस्ट करना है. व्हाट इज द फार्मूला, माय डियर? इफ यू सी, द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज इक्वल टू I square into dm by d theta. So this I can write it as I1 into I2 dm by d theta. Okay, so this is a current passing, this is IRMS by 2, Im by root 2, and this is also Im by root 2 into dm by d theta. So if you apply the average torque principle for this, what we are going to get? We are going to get current passing through the potential current coil, and this one we can take the potential coil VPC, and we are going to get a cos phi, and we are going to get RPC, and we are going to get a dm by d theta. When you apply the average torque expression to this expression, if you apply the average torque, सर मंडे टू सेमिस्टर एग्जाम है मेजरमेंट्स का, ये सेमिस्टर एग्जाम के लिए भी यूज होगा बेटा, सेमिस्टर एग्जाम के लिए भी यूज होगा. सो इफ यू सी माय डियर, द डिफ्लेक्शन टॉर्क एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल टू VPC ICC cos phi. If you take this 1 by RPC dm by dt as constant, now this is coming as what, my dear? The reason. Okay, similarly controlling torque. So deflection torque is proportional to VPC ICC cos phi. Next, controlling torque is equal to Kc theta. So overall theta is proportional to average power. That means the scale is uniform or not? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डायनामोमीटर टाइप अमीटर नॉन यूनिफॉर्म, डायनामोमीटर टाइप वोल्ट मीटर नॉन यूनिफॉर्म, द डायनामोमीटर वाट मीटर यूनिफॉर्म. बेटा मजा आ गया? दैट्स व्हाई डायनामोमीटर वाट मीटर is a linear scale or a uniform type. Please note down this theory bit. मजा आ रहा है? थैंक यू सहल. अंडरस्टूड मेरे दोस्तों? मजा आ गया? ये क्वेश्चंस है ना, अरे सर सब लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते, एवरीबॉडी कैन डू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस.
everybody can do numerical questions, but the point is the theoretical questions my dear. ये theoretical questions को आंसर करने के लिए आपको माइंड में कॉन्सेप्ट इतना क्लैरिटी होना है. देखो बेटा इतना क्लैरिटी दिया मैंने पूरा, सॉरी इधर देखो कितना क्लैरिटी आ गया हमको कॉन्सेप्ट. डायनामोमीटर अमीटर में स्केल कैसा आ रहा है, डायनामोमीटर वोल्टमीटर में कैसा आ रहा है, डायनामोमीटर वाटमीटर में डायग्राम कैसा आ रहा है. डायनामोमीटर वाटमीटर के लिए हम एक डायग्राम यूज करेंगे. व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डायग्राम? So there are two current coils my dear. So this is the current coil and this comes our load my dear. So this is our load and here comes our moving coil. So this is our moving coil and having some resistance. So this is our moving coil. Okay. So अगर आपने जो कहाँ connect कर रहे, so based upon this moving coil is connected to एक spindle. This is connected to a spindle. And there is a pointer. Okay, there is a pointer like that. So just I want to short form of this representation of the wattmeter. So the short form of representation of the wattmeter, this is a current coil, that's it. This is a current coil. Why? Because fixed coil it split into two parts. बीच में space create करके हमने moving coil को जुड़ा रहा है. Okay ना? Actually current coil वो तो fundamental features से आपको ये पता होना है current coil क्या है. Current coil का nature क्या होना है? Current coil is करंट को अलाउ करना है. करंट कॉइल मस्ट बी थिक इन साइज, ये बहुत थिक होना है बट शॉर्ट इन लेंथ होना है. थिक इन साइज एंड शॉर्ट इन लेंथ माय डियर. साइज थिक है तो थिकर इन साइज, थिक साइज है, शॉर्ट लेंथ है. थिक साइज होना है, शॉर्ट लेंथ होना है. ये भी थियरेटिकल बिट है, ये भी कॉन्सेप्चुअल बिट है. ये कॉन्सेप्चुअल बिट्स अगर आए तो सर कैसा होता है ना, आजकल एग्जाम में समटाइम्स यू आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फुल ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड आपको क्वेश्चंस कैसा आ रहा है, आपको थियरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैं बताऊं आपको गेट 2022 में मेजरमेंट्स में एक ही मार्क आ गया फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स. इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए 8 मार्क्स आ गया, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए केवल 1 मार्क आ गया. वो 1 मार्क भी क्या बिट आ गया मालूम? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज इज सुटेबल फॉर द इंडक्टेंस मेजरमेंट. ही हैज गिवन शेयरिंग, he has given some Wheatstone bridge, he has given the Maxwell. The right answer was Maxwell. The right answer was the Maxwell. मजा आ रहा है? So what you understand here? आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ आपने ये थियरेटिकल कॉन्सेप्ट, विशाल सर भी आए हैं. विशाल सर का पूरा सेशन आप देखो, जितने लोग आज मैथमेटिक्स का महा रिवीजन स्टार्ट होने वाला है एंड ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम्स का सेशन को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ गया. अरे यार अगर आपने गेट डबल और ईसी का पेपर अटेम्प्ट करना चाहे तो आपको न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत है कंट्रोल सिस्टम्स में, मैथ्स में. सो एवरी एस्पिरेंट इधर गेट वाला में, एवरी टीम द्रोणा में, पूरा टीम द्रोणा में, ईच एंड एवरी फैकल्टी आर डेडिकेटेड टू गिव द बेस्ट कंटेंट एट अफोर्डेबल प्राइस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. इतना डेडिकेशन, इतना टाइट शेड्यूल है हमारा. आप देख रहे हैं लास्ट 1 मंथ से हमारा पूरा शेड्यूल कैसा है. Some faculties are taking the sessions in the live classes and today they are having the sessions in Maha revision. Some of the people are taking the live app classes also. इतना डेडिकेशन से आपको इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है. पूरा लॉन्ग सेशन से 8 बजे 7 घंटे 7 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स का सेशन आपको मिल रहा है. एंड ये सेशंस कैसा है? ये सेशंस में आपको क्वालिटी कंटेंट आ रहा है. ये सेशंस में आपको मार्केटिंग का कुछ हलचल नहीं रही. सी देखो मेरा पूरा कल सीओए का सेशन हो गया, कंट्रोल सिस्टम का सर का सेशन देखो, ईडीसी सर का सेशन 9 घंटे 9 आवर्स ईडीसी सर चंदन सर का. ईच एंड एवरी फैकल्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर पीडब्ल्यू फैमिली आर डेडिकेटेड. दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग आवर फैमिली ऑफ पीडब्ल्यू शुड बी प्राउड बाय सीइंग द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी. ओके चल, तो दिस इज हमारा करंट कॉइल है. करंट कॉइल का बेसिक देखो, करंट कॉइल में करंट ज्यादा जाना है. सो करंट शुड बी मोर माय डियर. अगर करंट ज्यादा होना चाहिए बोलो तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? आई एम एक्सपेक्टिंग करंट मोर मींस रेसिस्टेंस कम होना है. रेसिस्टेंस कम होना बोलो तो आर इज इक्वल टू रो एल ए बाई बेटा. रो एल ए बाई रेसिस्टेंस कम होना बोलो तो एरिया ज्यादा होना है, इसलिए ये साइज थिक है. देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. द कॉइल का साइज, ये प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछ दिया है. व्हाट शुड बी द फीचर ऑफ करंट कॉइल? करंट कॉइल शुड बी थिक इन साइज, शॉर्ट इन लेंथ. लेंथ कम होना है, लेंथ कम होने की वजह से आर इज इक्वल रोयल वे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा.
लेंथ शुड बी लेसर, एरिया शुड बी मोर। इसकी वजह से क्या होगा, इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर ज्यादा करंट को अलो करेगा, it is going to allow more current. Whereas the potential coil or pressure coil or moving coil, different names है उसको, उसका नेचर क्या है, this will be narrow in size but longer in length, क्योंकि उसको वोल्टेज डेवलप करना है ना, सो उसमें वोल्टेज डेवलप करना है बेटा, दैट्स वाई लॉन्गर साइज है, बेटा, लॉन्गर साइज है, एंड सॉरी लॉन्गर लेंथ, thin and lengthy. These are this silly things बेटा, ऐसा पूछने की चांसेस है, बिकॉज MSQ आपके पास MSQ भी है, along with MCQ you are having MSQ my dear, MSQ में इतना ट्रिक्स आने की चांस है, गॉट इट। चलो ये कंस्ट्रक्शनली क्या होगा, वी आर गोइंग टू अटैच टू ए लोड माय डियर, सो वी आर गोइंग टू अटैच टू ए लोड हियर। So now most important point, where you are going to connect this particular potential coil. So based on this also we are having some important formula. So अगर ये potential coil is connected to the mains side, उसको हम बोलते हैं MC connection. अगर ये potential coil is connected to the load side, उसको हम बोलते हैं LC connection. इतना सिंपल से मैंने वन शॉट सीरीज में बोला, YouTube क्रैश कोर्स में बोला, मेजरमेंट्स को पूरा फिल्टर कर दिया मैंने, मेजरमेंट सब्जेक्ट को पूरा हमने फिल्टर कर दिया, एक्सेलेंट। मैं बच्चों का आंसर देके तो पोटेंशियल कॉइल शुड बी हाईली रेसिस्टिव और इंडक्टिव, हाँ एक्सेलेंट क्वेश्चन, बहुत सुपर क्वेश्चन पूछा, आई विल कम टू दैट पॉइंट। वी एक्सपेक्ट पोटेंशियल कॉइल मस्ट बी हाईली इंडक्टिव। एक्चुअली स्पीकिंग, if you are expecting for the zero error, I will tell you, in our diagrams we expect pure resistive coil, but market potential coil we expect pure resistive. अगर pure resistive है तो क्या होगा, if you are having pure resistive, what happens my dear, there will be no losses will be less. But do you have the concept of pure resistive? Can you expect any coil in the market as pure resistive? No. Or at least can you expect the coil as purely inductive? No. That is the reason why we are going to show like this, inductance concept and resistance concept. You understand? Now we are going to connect this here. So this is a moving coil. So this is our main section. So this is a load section. So इसको हम बोलते हैं MC connection बोलते हैं बेटा। तो क्या बोलते हैं हम, MC connection. Ideally, we expect the potential coil must be purely resistive. If it is purely resistive, some of the textbooks का diagram ऐसा होगा. I think most of all the textbooks में you can see the diagram like this. Am I right or not, my dear? Yes or not? Pure resistive, but that is not possible practically. Clear हो गया गजेंद्र सिंह? सर आपका ट्रांसड्यूसर का रिवीजन भी कल करियोगे किया? वेरी गुड ब्रह्मा। आई एम प्लानिंग जस्ट आई विल अपडेट। आज अभी हमारा सेशन ऐसा शेड्यूल टाइड है, एक बार डबल ही इसी का सेशन होने के बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस MC कनेक्शन है माय डियर। सो इन MC कनेक्शन क्या होगा, सो इफ यू सी द ट्रू वैल्यू क्या है, द ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू वी एक्सपेक्ट दिस लोड पावर, दैट इज अ VL IL cos phi। बट मेजरमेंट वैल्यू क्या होगा, मेजरमेंट वैल्यू क्या होगा, इन एडिशन टू दिस ट्रू वैल्यू वी आर गोइंग टू हैव an extra component. What is that? Current passing. So this is a current passing here. So this power also is going to come into picture. So this power and this power both are going to come into picture. Current power consumed by the current coil. Am I right? Am I right, my dear? Power consumed by the current coil. But resistance should be more or inductive. My dear Gajendra Singh, I am telling you, actually speaking, with respect to phase concept, if you are thinking,
it should be purely inductive. If it is pure inductive, the phase angle between the current and the voltage will be 90 degrees. You understand? The phase angle between the current and the pressure coil is 90 degrees. Is it clear up? Yeah. But practically, it is not possible. Practically, we don't have, it is not possible. That's why it is neither 90 degrees. The coil is neither purely resistive nor purely inductive. So, depending upon your situation, if you want to increase the deflection torque, इसके लिए क्या करना है, हमने उसको inductance effect को increase करना है. Inductance effect को increase करना है. We are having an advantage of this inductance effect and also disadvantage. That's a very sensitive point. Try to understand. We expect it should be purely resistive or purely inductive, or highly resistive or highly inductive, but दोनों possibility नहीं है. Gajendra Singh, yes, excellent. Minus tan phi minus tan beta error, that is due to the inductance effect. If it is purely inductive, that error can be eliminated. Purely inductive, that error can be eliminated, but that is not possible. Okay. Chalo. So what is this error here? True value क्या है? True value ये है current coil. This is true value, and इधर आएगा आपको I square or CC. Please note down. So this is the error here is I square or CC. Current passing I square or CC. Okay. So the same thing. If I am taking this LC connection, if I am taking the LC connection, my dear, sorry, if I am taking the LC connection, in LC connection क्या होगा? So this is my current coil, this is हमारा load, so this is हमारा moving coil, and this is a resistance, and now this I am connecting here. Chalo. So now this is the supply, single phase AC supply. So this time, what is the error? So this is our RPC, and this is the voltage drop here. So this is our true power. So the true power is equal to V L I L cos phi, whereas the measurement power along with this true value, we are also going to get this power consumed by the moving coil. This is a moving coil, my dear. So that is the power consumed by the moving coil. So that is true value plus V square by R. So this error here is V square by RPC. So this is the error due to what connection? This is MC connection. Error due to MC connection, and here I square RCC, this is error due to, sorry, this is MC connection, this is MC connection, and this is LC connection. This is LC. Excellent. मजा आ गया? Hello. See, clear? Chalo. And one important point here. Basically,
we are also having error. Now by using this, okay, first we will discuss about the instruments. What are these instruments we have discussed? We have discussed the PMMC, we have discussed the moving iron, we have discussed the dynamometer, and the last we are going for the thermal instrument. Thermal instruments का concept बहुत simple है. ये thermal instruments के लिए मैं एक अच्छा concept बताता हूँ. Thermal instruments के लिए मैंने thermocouple का concept use कर रहा हूँ. Thermocouple is hardware instrument और thermocouple instrument. Hardware instrument कुछ भी नहीं है, just a small wire is attached between the edges. When you are heating, the dimensions are going to be changed. So there is a change in length because of the heat. There is a wire is connected between the two edges. Okay, so this particular wire, suppose is getting a current, इसमें current आ रहा है, suppose you are discussing current, suppose continuously current जा रहा है, क्या होगा? Heat effect होगा. Because of the heating effect, what happens? There is a change in dimensions. Heating effect की वजह से क्या होगा? There is a change in dimension. There is a physics principle. The length is going to be differentiated. Sir, not. So the change in length, please note down. This is also one of the expected question. Change in length is proportional to heat. Heat is proportional to the power dissipation. The power dissipation is due to the heat dissipation, that is I square R. Okay, so the change in length is proportional to I square, and the change in length is proportional to V square. So it is called hot wire type ammeter, hot wire type voltmeter. See, my question here is, what is the advantage of this thermal instrument? Sir, we are already having dynamometer for measurement of AC DC. We are already having a moving iron instrument for AC DC. Then why we are going for this particular thermal instruments? Can anybody tell me? Can anybody tell me? Already we are having two instruments. We are having the moving iron instrument and we are having the dynamometer type instrument for AC and DC. Then why we have to do excellent? This is the most important concept, high frequency. Yes or not? My dear students, all our conventional instruments, they are going to become failure at a particular frequency because our Indian basic mechanism, frequency 50 Hz or more than 50 Hz, suppose 60 or 70 Hz. But the frequency is increasing, the coil construction, because every measuring instrument which is intended to measure the power, definitely should have a potential coil. When I'm using the word potential coil, definitely it is having some inductance, definitely it is a concept of frequency. Agar ज़्यादा frequency current आए तो that particular coil may not sustain, that particular coil may not retain the correct values. My dear aspirants, please note down where the instrumentation comes into picture. When all your physical mechanisms, when all your electrical mechanisms, when all your magnetic concepts, electrical concepts, current concepts, voltage concept, power concepts fail, when everything fails, instrumentation succeeds. Heat comes into picture, light comes into picture. If you are not able to measure something with the available mechanisms of the world, then you have to go to the instrumentation. In instrumentation, there are some wonder concepts. There they will use the temperature concept, they will use the light concept. They are suitable for high frequency measurement. They are best suitable for high frequency measurement. The frequency range is megahertz. Please note down this concept. Thermocouple type instrument and hot wire type instruments, they both are suitable for the frequency of megahertz. A expected question hai. Actually speaking, first comes the PMMC 0, next comes the moving iron, next comes the dynamometer, next comes the CRO. Actually, after the CRO, we are going to get thermal instruments, my dear. PMMC cannot use for sources the frequency, M and EDM have high frequency. Excellent, excellent Pramit Banerjee. But that frequency में range भी है. Okay, so PMMC तो possible ही नहीं है. नेक्स्ट मूविंग आयरन है, इससे बेटर डायनामोमीटर है, इससे बेटर कौन है? CRO है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है. कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बाद ये थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स है. When all instruments fail, instrumentation comes into picture. Excellent, excellent, excellent. अरे super optical pyrometer. Please note down. When everything fails in this world, then light succeeds, my dear. Please note down this statement. ये मेरा प्रोफेसर ने मुझे बताया है. When I'm studying my BTech, one of my college professors has told this statement. When everything fails,
light succeeds. One of my professors, I don't want to give the name. So when everything fails, light succeeds. In this world, that's the reason, that's a beautiful concepts. चलो चलो मजा आ गया बेटा. When everything fails, the light succeeds. I mean, light means here in the place of light you can use any temperature concept and light concept. Okay. Next comes the electrostatic voltmeter, my dear. Next instrument is electrostatic voltmeter. Very interesting concept. ये electrostatic voltmeter में क्या है? In electrostatic voltmeter we are using the two capacitor plates. These two capacitor plates में एक capacitor plate is connected to high voltage. A capacitor plate is connected to high voltage. So this is connected to a high voltage, and this particular thing is connected to a spring. Is connected to a spring, my dear. I can show you like this. That is the best way. I will show like this. Two capacitor plates, one is connected to a high voltage and the other one is connected to a scale. So this scale is a spring. The spring is connected to a scale with a pointer. Okay, so simple concept hai. Whenever you are applying the high voltage, my dear, because of this high voltage, what happens? There is a force of attraction. There is a force of attraction. This force of attraction exists between these two capacitor plates. This force of attraction is given by the expression 1/2 v square dc by dx. And x is a displacement happening. This x is a displacement happening, my dear. So यहां से आपको क्या मिलेगा? एक टार्क जनरेट होगा. ये लीनियर टार्क है. अगर आपने ये प्लेट्स को सर्कुलर प्लेट्स की फॉर्म में डिजाइन करो, सर वी नीड टू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट. एक सेकंड. In this, what happens? This particular spring is going to get expanded. The same construction if I use for the deflecting torques. That means if I am having like this, if I am having the plates like this, okay, if I am the two capacitor plates like this, then the force of attraction makes this particular to deflect. So that deflection can be measurable in the form of deflection. The deflection torque is given by 1/2 v square dc by d theta, my dear. It is a linear electrostatic voltmeter. The same thing we can design with the, see here, the same thing we can design. So for electrostatic voltmeter, TD is equal to 1/2 v square dc by d theta. So here I want to write some important concepts. Listen all of you, finalize करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में जा रहा हूँ, टाइम कम है. देखो मेरा डियर स्टूडेंट्स, एक आराम से देखिए इधर. इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट. यहाँ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा, यहाँ डिफ्लेक्शन टार्क आएगा, यहाँ कंट्रोलिंग टार्क आएगा. So this is the type of instrument, my dear. This is a type of instrument. This is for exam. GATE के लिए a फंडा फॉलो करो. This is a type of instrument, and this is my deflection torque formula. This is a controlling torque formula. This is the application formula. So type of instruments I am taking here a PMMC first. PMMC के लिए डिफ्लेक्शन टार्क है PM बिना, कंट्रोलिंग टार्क है KC थीटा, एप्लीकेशन है DC. नेक्स्ट मूविंग आयरन के लिए फॉर्मूला 1/2 I स्क्वायर DL by D theta. This is KC theta and this is for AC as well as DC, my dear. Next comes electrostatic voltmeter. I am writing here electrostatic voltmeter 1/2 v square dc by d theta. Please remember, we are using the self inductance concept. Sir, need help?
आपका सब्जेक्ट का अलग से कोर्स परचेज कर सकते हैं क्या? ओनली मेजरमेंट सब्जेक्ट्स। बेटा जनरल मैं मेजरमेंट्स पढ़ाता हूं, केवल वी आर नॉट प्रोवाइडिंग सिंगल सब्जेक्ट परचेज in gate wala. We are not providing single subject purchase as of now. Okay, you have to take the total course, you have to take the total gate EE or gate EC course. Okay, if you are expecting my subjects, I will be handling measurements, I will be handling computer measurements for electrical students and instrumentation student, and I will be handling computer organization architecture exclusively for EC student, and I will be handling sensors and industrial instrumentation for instrumentation, optical instrumentation for instrumentation, process control instrumentation for instrumentation, microprocess PLC SCADA for instrumentation. If possible in future, I will also take mechatronics for mechanical students. So this is half V square dc by d theta, controlling torque is equal to kc theta. This is also suitable for AC DC, my dear. Everybody is following, everybody is there. Sonu is here, are you there? Juhi, are you there? Dynamometer. Dynamometer का formula confuse मत करना, there will be no half. Half comes only for moving air and electrostatic voltmeter. So this is I square dm by d theta, my dear, and this is kc t theta, my dear. It is also suitable for AC DC. Thermal instruments, majorly thermal instruments में we don't have the deflection torque concept. Thermal instruments में change in length or the EMF. It is hot wire instrument and this is thermocouple type instrument. It is proportional to I square R, that's it. It is proportional to I square R. So this is also AC DC. Okay, my dear. Is it clear? Shivam Goswami, hello. Yeah. Very good, very good. Now, one of the student was asking hot wire instrument. See, actually hot wire instrument ko just in instrumentation we are using the concept called hot wire anemometer, but here the same concept we are using a wire. So this is the wire, my dear. This wire is suspended with a strong supports here. Simple concept hai. Here what is the concept? We are entering a current here. When a current passes through this wire is having some resistance, right? R is equal to rho L by A. When current is continuously passing, high frequency current means what? In megahertz. So frequency of current is megahertz, बोलो तो 10 power 6 times. एक सेकंड में 10 power 6 times करंट जा रहा है, एक सेकंड में 10 power 6 करंट जा रहा है, एक सेकंड में 10 power 6 करंट जा रहा है. इसकी वजह से क्या होगा? मोर रिपीटेटिवली हीट डिसिपेशन होगा. मोर रिपीटेटिवली हीट डिसिपेशन होने की वजह से क्या होगा? Temperature of the wire is increasing. When temperature of the wire is increasing, the physical dimensions of the wire will be increasing. The wire which was stiff, slowly it is going to become dump like this. It is going to become bend like this. So because of that, what happened? If you connect a pointer to it, whenever it is going to change in its dimension, so there is a deflection in the meter. There is a deflection in the meter. That is a simple concept. अगर आपको कोई perfect image चाहिए, Google में search कर सकते, कोई ना कोई textbook में search कर सकते. प्रमित बनर्जी, आपका doubt clarify हो गया? प्रमित बनर्जी, आपका doubt clarify हो गया? Because of high frequency current, the more frequently the current traveling in that wire, it is a heat dissipation. That heat dissipation makes certain change in the physical dimension. Because of this change in length, the wire which was tight is going to become loose. When it is going to become loose, an aluminum pointer is there. That aluminum pointer is going to change. Mechanical things you can go through. Thank you, my dear. Thank you. So all of you enjoyed this session. So इतना सारा instruments मैंने discuss किया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में भी आपके एक एक्सलेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन दिस. इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिकल वोल्टमीटर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, लेकिन इसको सीएम रहेगा. व्हाट इज गोइंग टू हैव? दिस इज गोइंग टू हैव सीएम. दिस इज गोइंग टू हैव सीएम. ओके, एंड सो दिस इज आवर वीएम. सो वी आर गोइंग टू अटैच रेंज एक्सटेंशन भी कर सकते. इट इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, जस्ट लाइक ammeter. We are having electrostatic voltmeter. Electrostatic voltmeter is actually used in R&D laboratories. I think in your physics you could have studied the vacuum tube is supplied with a power supply of 100 kilovolts. ये 100 kilovolts कैसा मेजर करेगा? ये 100 kilovolts को मेजरमेंट करने के लिए हमको PMMC मूविंग एरर का कैपेसिटी नहीं चलेगा. इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर लगेंगे.
ओके, जहां जहां आपको हाई वोल्टेज मेजर करना है वहां आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको भी रेंज एक्सटेंशन करना है। उसको रेंज एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करना है, एक सीरीज रेसिस्टर को सीरीज में ऐड करना है। We are going to add a series resistor, so the value of series resistor is given by Cm by m minus 1, my dear. Please note down this point. Please note down this point, my dear. जितने लोग सेशन को देख रहे, जितने लोग सेशन को देख रहे, ये रेयर पॉइंट्स को भी नोट कर दो बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में भी रेंज एक्सटेंशन करने के लिए एक सीरीज रेजिस्टर कनेक्ट करना है, क्योंकि इस मीटर इज मेड अप ऑफ कैपेसिटेंस कॉन्सेप्ट। मीटर का इंटरनल कैपेसिटेंस होता है, उसको एक्सटेंशन करने के लिए हमने सीरीज कैपेसिटेंस लगा दिया। एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट, हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड कॉन्सेप्ट प्रमित बनर्जी। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमने मेगर यूज कर रहे, सिमिलरली हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर यूज कर सकते। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमने मेगर यूज करते हैं, हाई वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर यूज करते हैं। उसमें सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है Cm by m minus 1। ये m क्या है, कैन यू टेल मी, m क्या है बेटा? m is again same my dear, m is again capital V by small v, capital V by small। चलो बेटा, एक छोटी सी ब्रेक, जस्ट 2 to 3 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, पानी पी के आता हूं मैंने। आई विल हैव अ कप ऑफ वाटर, आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द ब्रिजेस। ओके, विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक विल टेक द ब्रिजेस।
हम सॉरी, अभी क्लियर है? अभी आवाज आ रहा है? हाँ, ओके ओके। जस्ट इन द ब्रेक टाइम आई पुट ऑफ। ओके, मैं रिपीट करता हूं बेटा, मैं रिपीट करता हूं। रेसिस्टेंस मेजरमेंट में लो रेसिस्टेंस, मीडियम रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस की क्लासिफिकेशन है। लो रेसिस्टेंस के लिए क्या मेथड्स यूज कर रहे? लो रेसिस्टेंस के लिए पोटेंशियोमीटर मेथड यूज कर सकते हैं, एवी मेथड यूज कर सकते हैं, अम्मीटर वोल्टमीटर मेथड, एंड द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड इज द केल्विन डबल ब्रिज मेथड. Number of times this question was asked in the GATE exam. Which of the following bridges is best suitable for low resistance? The answer is Kelvin double bridge. But GATE 2021 में एक numerical question आ गया. This whenever the numerical question comes, you cannot solve it by using the KVL, KCL भी solve कर सकते, लेकिन बहुत time लगेगा. इसके लिए मैं एक अच्छा important formula दे रहा हूँ, देखो ध्यान से. If you see the Kelvin double bridge का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? एक आउटर आर्म्स रहता है, आउटर आर्म्स P, Q, R, S. इसमें हमारा अननोन टेस्ट रेसिस्टेंस विच इज लेसर देन 1 ओम, दिस टेस्ट रेसिस्टेंस है R. सो उसका वैल्यू पता होना है. एंड लोअर आर्म्स रहता है दैट इज स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल r. एंड ये स्मॉल r को लीड रेसिस्टेंस बोलते हैं. आवर क्वेश्चन हियर इज दिस कैपिटल R को कैसे एक्सट्रैक्ट करना, उसके लिए एक फार्मूला है. वो फार्मूला रिमेंबर करने के लिए मैं एक ट्रिक बोल रहा हूं. व्हाट इज द ट्रिक? इफ यू वांट टू नो द ट्रिक, फर्स्ट गो टू द व्हीटस्टोन ब्रिज. इमेजिन अ व्हीटस्टोन ब्रिज having 4 resistors. I'm not taking the voltage source for simplification. This is a P and this is a Q and this is a R and this is a S and this is the unknown resistor. This unknown resistor को मैं find out करना चाहता हूं. Starting at the balance क्या होगा? Product of opposite arms equal होगा. So P into S is equal to Q into R होगा. यहां से आपको unknown resistance R को निकालना है. So R is equal to P by Q into S. Am I right? Am I right? Rohit, Soni, Cosmos, Anjali, Sonu, Cosmos. या 6 दिन में गेट कैसे निकालता है? अभिषेक, ये क्वेश्चन को मैं कैसे आंसर करूं? ये 6 दिन आप हमारा महा रिवीजन को फॉलो कर लो. ये 6 दिन आप कुछ भी नहीं कर लो, पूरा यूट्यूब में महा रिवीजन फॉलो कर लो, आपको डेफिनेटली क्वालिफाई तो हो सकता है. आई अश्योर यू, यू आर गोइंग टू बी क्वालिफाइड. जस्ट अटेंड द महा रिवीजन सेशंस, ओके, एंड हैव द थिंकिंग पावर ऑलवेज दैट आई कैन डू इट. So R is equal to P by QS. Now for Wheatstone bridge के लिए unknown resistance R का फॉर्मूला क्या है? P by Q into S. Okay. Now for Kelvin double bridge, how to remember this? Everything is same, my dear. Capital R is equal to capital P into capital Q into S plus some extra term है. What is that extra term? Listen. What is that extra term? I will tell you. Here capital P by Q है ना, so please take the brackets. Capital P by capital Q minus small p by small q. Is it clear? P by Q से स्टार्ट हो गया ना, रिपीट करो. डबल ब्रिज में डबल होना है. कैपिटल P by Q रिपीट करो. कैपिटल P by Q माइनस स्मॉल p by Q. एंड नेक्स्ट इस कैपिटल P से शुरुआत हो गया ना, सो उसका सीक्वेंस स्मॉल q r p q r में कैपिटल P का सीक्वेंस q r स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल r. ये सिंप्लीफाई होता है, आपका टाइम सेव होता है. प्रतीक शर्मा कैसे हो? सिंप्लीफाई हो गया, इजी है ना? इजी टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, यस और नो? बेटा बताओ ना, easy to remember or not? If you remember the Wheatstone bridge concept, R is equal to P by QS plus इसका डबल ब्रिज में डबल आना है. P by Q माइनस स्मॉल p by Q डबल पिक्चर है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, डबल हो गया ना, डबल हो गया ना. मजा आ गया? ऐसा बहुत सारा ट्रिक्स है ना. ओ थैंक यू प्रतीक शर्मा. क्योंकि ये टफ फॉर्मूलास है ना, एग्जाम में बहुत दिक्कत होता है बच्चों के लिए. क्या होता है डबल क्या सर हमने केवीएल यूज करेंगे सर, केसीएल यूज करेंगे, इतना क्यों? मेरे डायरेक्टली क्वेश्चन केल्विन डबल पर दे रहे बोले तो उसका
when the question is asked on Kelvin double bridge, definitely you have to use the formula. Formula use करो, problem solve हो जाएगा फटाफट. फॉर्मूला यूज करो, प्रॉब्लम सॉल्व होगा. रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आएगा? लेस देन 1 मिली ओम तक भी आ सकता है केल्विन डबल ब्रिज. मजा आ गया? चलो, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, मीडियम रेसिस्टेंस. जस्ट आई एम चूजिंग द फेमस मेथड्स. ओके, मेजरमेंट ऑफ लो रेसिस्टेंस में, अरे सर नो टाइम फॉर थैंक यू एंड ऑल, आईआईटी कानपुर ने पेपर खतरनाक सेट किया है उधर. क्या करूं भाई? अरे सर नो टाइम फॉर थैंक यू एंड ऑल. ये अभिषेक भाई, आप इतना ओवर थिंकिंग ना करो. डोंट डू ओवर थिंकिंग. जो कुछ होने वाला है होने वाला है. आपको हाथ में अभी आईआईटी कानपुर का पेपर कैसे आपके हाथ में नहीं है. हाउ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर, वेदर द पेपर इज इजी और मॉडरेट और टफ. अगर आपको कोई फोन करके बताया, उसका फोन नंबर दीजिए ना. Did anybody call you and tell मैं आईआईटी कानपुर से बात कर रहा हूँ, आज ये साल का पेपर बहुत टफ होने वाला है. आपको कुछ फोन आ गया, उसका फोन नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ मेजरमेंट्स में कितना क्वेश्चन आ गया. अरे यार, आपको जो हाथ में है उसके बारे में सोच लो, ओवर थिंकिंग ना करो. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू द लास्ट 7 days ऑफ द गेट एग्जामिनेशन. Before the 7 days, you should not think over. Whatever is there in the hand, the only time of 24 hours per day is there. You attend all the revision sessions. Arey, forget the result, forget the exam, forget all those things. You just focus. चलो, next comes the medium resistance, my dear. Medium resistance बोलो तो 1 ohm से 100 किलो ohms तक. इसके लिए फेमस है फर्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज से हमको क्वेश्चन आने वाला है. व्हीटस्टोन ब्रिज में number of questions we have discussed. Wheatstone bridge में questions can be asked on the current division concept, bridge sensitivity concept, ये पूरा. Next, substitution method, VA method, ohm meter method. Wheatstone bridge में one of the important features I want to tell you. Wheatstone bridge में one of the, one second. Wheatstone bridge में one of the important feature I want to tell you. क्या मीडियम रेसिस्टेंस के लिए Wheatstone bridge यूज कर सकते हैं ना. सो Wheatstone bridge में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है. ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है. देखो, सो सपोज दिस इज वन रेसिस्टेंस R, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4. So what type of questions we are going to get in Wheatstone bridge? Just please go through. This is a VS, this is a plus and minus, this is a meter resistance, this is a RM. Okay, suppose initially if R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4 is equal to R, then definitely V bridge क्या होगा? V bridge will become 0. Everybody knows it, balance हो जाएगा. ओके, V bridge is equal to 0. ओके अभिषेक, अरे जल्दी बताओ यार, आईआईटी कानपुर का फोन नंबर बताओ. मैं फोन करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी. मैं कानपुर का आईआईटी का प्रोफेसर से फोन करना चाहता हूँ, जल्दी बता. सो V bridge 0 है. अगर कोई ना कोई रेसिस्टेंस, सपोज दिस R1 is changed by R plus delta R. Remember, 2 conditions must be satisfied. RM must be infinite. First condition. Second condition, all the initial resistors must be same. All the initial resistors must be same. All the initial resistors must be same. Then, if one of the resistance is changing by R plus delta R, now R1 is R plus delta R, and remaining other resistance R2, R3, R4 or R, then Wheatstone bridge के लिए एक formula है. That formula is what? If all the resistors are equal, and only one of the resistance is changing its arm resistance by del R, so this R plus delta R, this is R, this is R, this is R, then क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा Vs by 4 into delta R by R हो जाएगा. ये फॉर्मूला के ऊपर मैं ऑलवेज एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ये फॉर्मूला के ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है. मजा आ गया? इज इट क्लियर मेरे दोस्तों? क्वार्टर ब्रिज का एक्सप्रेशन है ये.
सो क्वार्टर ब्रिज का एक्सप्रेशन है, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर ब्रिज। सो हियर आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजीएस्ट फार्मूला है, इजीली आप रिमेंबर कर सकते हैं। क्वार्टर मालूम है आपको, क्वार्टर, क्वार्टर हाफ फुल है, प्रतीक शर्मा क्वार्टर हाफ फुल मालूम है ना। या अगर एक रूम में एक आदमी है तो फुल इनफ है उसके लिए, अगर एक रूम में 4 बंदा है उसको 4 दोस्त से डेफिनेटली उसके लिए क्वार्टर लगाना पड़ेगा। कितना आएगा, एक आदमी को क्वार्टर मिलेगा। ये क्वार्टर ब्रिज में एक रेसिस्टेंस आउट ऑफ द 4, वन रेसिस्टेंस आउट ऑफ द 4, 1/4, देन क्वार्टर का फॉर्मूला बोल दो Vs/4, दैट्स इट। V bridge is proportional to del R, my dear. इधर sensitivity of the bridge is expected question. Sensitivity of the bridge is equal to V bridge by del R. V bridge by del R, क्योंकि ब्रिज का आउटपुट किसकी वजह से आ रहा है, del R की वजह से आ रहा है। सो सेंसिटिविटी इज इक्वल V bridge by R, सो उसका फॉर्मूला होगा Vs/4 into R। मजा आ गया, मजा आ गया बेटा, यार मजा आ गया, बोलो ना। हम पीते हैं रे, हमको पूरा वही काम है। सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज क्या है, V ब्रिज बाय del R, Vs/4R। मजा आ गया, वेरी इजी टू रिमेंबर ना, आराम से ये फॉर्मूला को आप रिमेंबर कर सकते हैं। V ब्रिज इज इक्वल Vs पे, बट कंडीशन क्या है, 2 कंडीशंस मस्ट बी क्लियर माय डियर। First condition is the meter resistance must be infinite, and the second condition is all the initial resistance must be same. Remember this point. If any one of this condition failed, you cannot use this formula. If any one of this condition failed, you cannot use this formula. Questions, अरे यार क्वेश्चंस बोलो तो मैंने अभी कलेक्ट करना है, आप आंसर्स बहुत करना है बेटा। 7 बजे को सेशन को एंड करना चाहता हूँ, क्योंकि 7 बजे को आपको सब सेशन है, EMT का सेशन है, सर का मैथ सेशन है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको क्वेश्चन चाहिए, यू कैन अप्रोच द सुपर 10 सीरीज, सुपर 30 सीरीज, PYQ सीरीज। प्रतीक शर्मा, वी आर ऑलरेडी हैविंग PYQ सीरीज इन अवेलेबल इन YouTube, वी आर ऑलरेडी हैविंग सुपर 10 सीरीज, वी आर ऑलरेडी हैविंग सुपर 30 सीरीज, एंड ऑलरेडी वी आर हैविंग वन शॉट सीरीज। इतना कंटेंट है YouTube पर। चलो चलो, and one more important point here I want to tell you, most of all the cases, don't confuse with the deflection sensitivity of the meter. Deflection sensitivity of the bridge अलग है, sensitivity of the meter अलग है। Deflection sensitivity of the meter, sensitivity of the meter ऐसा दे सकता है, deflection theta by current। If this is the PMMC, if you are using here, definitely watt meter use करना है, PMMC यूज करना है, क्योंकि हमने DC ब्रिज यूज कर रहे हैं ना। DC ब्रिजेस के लिए हमको डिटेक्टर कौन है, PMMC है। सो इधर आपको एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, एक ब्रिज एंड PMMC को मिला के एक क्वेश्चन पूछ सकता है। सो व्हाट इज दिस, करंट पासिंग थ्रू द मीटर, करंट पासिंग थ्रू द मीटर एंड द डिफ्लेक्शन, ये इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर। ओके, अंडरस्टूड माय डियर। सो इधर डोंट कंफ्यूज इन द एग्जाम, अगर ये एग्जाम में सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज कैन गिवन एज ohms पर ohms, sorry, this is volts per ohm my dear, this is volts per ohm। क्या है ये, volts per ohm है। ये क्या है, sensitivity of the meter, इधर डिग्रीज और सेंटीमीटर्स, डिग्रीज पर एम्पियर, डिग्रीज पर एम्पियर। सो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद दिस सेंसिटिविटी। ओके, for example, if you want to take one question, I will give one question here. Suppose if I'm having a resistance of, suppose if I'm having a resistance of 1000, so this is 1000 ohms, this is 1000 ohms, this is also 1000 ohms, this is also 1000 ohms, and ये है supply voltage, suppose supply voltage is 5 volts। Question number 1, and the meter resistance is infinite, so this particular resistance is changed, so the R1 is changed to 1010 ohms, then what is the V bridge, जल्दी बताइए बेटा फटाफट। and also please tell me what is the sensitivity of the bridge, फटाफट जल्दी बताइए, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना आप, फटाफट फटाफट।
क्या हो गया? आंसर वेट कर रहा हूं मैंने। प्रतीक, अरे यार क्वार्टर ब्रिज का फॉर्मूला यूज कर सकते ना इसमें। 4 रेसिस्टर्स इक्वल है, सॉरी दिस रेसिस्टेंस आल्सो 1000, तो 4 रेसिस्टर्स इक्वल है, 4 रेसिस्टर्स आर इक्वल रेसिस्टर्स है, सो आराम से आपने VS/4 इंटू डेल आर बाई आर यूज कर सकते ना। यस सर। तो VS कितना है? VS 5 वोल्ट है, 4 है, डेल आर कितना है? 10 है, आर कितना है? 1000 हो गया। सो खत्म। 50 बाई तो 4 टू 54 12.5 मिली वोल्ट्स आ गया ना। ఏమైంది संतोष? प्रतीक क्या हो गया? आंसर नहीं आ रहे हम आपके एंड से? कोई है उधर? कोई जिंदा है? या सो सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज कितना है? सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज बोलो तो आउटपुट ऑफ द ब्रिज बाय डेल आर। सो आउटपुट ऑफ द ब्रिज कितना है? 12.5 मिली वोल्ट्स एंड डेल आर कितना है? डेल आर इज इक्वल टू change in resistance. Change in resistance change to how much? This is 1000 plus 10 ohms. That's it, 10 ohms. तो क्या होगा? 12 125 by 100, so 1.25 millivolts per ohm हो गया. This is the sensitivity of the bridge. That means for a change of 1 ohm in the del R, for a change of 1 ohm in the del R, the bridge voltage will be changed by 1.25 millivolts. Yes, very good. Ohms, millivolts per ohms. Now क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैंने। देखो, दिस इज सपोज 400 ohms, दिस इज 400 ohms, दिस इज 400 ohms, दिस इज 400 ohms, and let us take this as some 10 volts, and here the meter is having some finite resistance this time. So this is suppose 10 volts, ये 400 ohms है लेकिन ये वेरिएबल रेसिस्टर है। दिस इज 400 ohms, दिस इज 400 ohms, दिस इज 400 ohms. The meter resistance RM, the meter resistance RM, ध्यान से सुनो बेटा, the meter resistance is 1000 ohms and the sensitivity of the meter, which is called the deflection sensitivity of the meter, I am taking 0.1 degree per micro ampere ले रहा हूं, 0.1 degree per micro ampere. Okay, and calculate deflection in degrees. Calculate deflection for a change of, for a del R of 40 ohms, for a del R of how much? 40 ohms. कैसे calculate कर सकते? Now tell me my dear, can I use the quarter bridge formula here? Asma, Sonu, Pratik, can I use the quarter bridge formula here? Can I use the quarter bridge formula here? No, because the meter resistance का value infinite नहीं है. So he is asking the sensitivity, he is asking the deflection for a del R of 40 ohms. ऐसे calculate करना. For a plus del R of, positive del R of 40 ohms. That means क्या हो गया? A bridge जब कैसा बदल गया? दिस इज 400 प्लस 40 हो गया, एंड दिस इज 400 हो गया, एंड दिस इज 400 हो गया, एंड दिस इज 400 हो गया. सो दिस इज नाउ 10 volts. So this is 400, this is 400, and this is 400. But the point here is the meter resistance also comes into picture. This meter resistance is now how much? The meter resistance is 1 kilo ohm, my dear. This meter resistance कितना है? 1 kilo ohm. The meter resistance कितना है? 1 kilo ohm. Understood? Now इसको कैसा? सर ये तो नहीं, यहाँ तो नहीं लग रहा. ओके ओके, हाँ. अभी ये प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करना है बेटा? ये प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करना है? If you want to expect the deflection comes with the current. So this is a current passing through the galvanometer or not? So आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट पासिंग थ्रू द galvanometer को कर लें.
So if you know the current passing through the galvanometer, then automatically you can get the deflection. What is the meaning of the sensitivity of the meter? ये है हमारा PMMC है, ये PMMC galvanometer है ना, ये particular मीटर जो कुछ है हम PMMC यूज कर रहे हैं. अगर 1 माइक्रो एम्पियर करंट जाए तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आएगा? 0.1 डिग्री डिफ्लेक्शन आएगा. So what I have to know? I have to calculate now the galvanometer current for change of resistance of how much? For 40 ohms del R. So 40 ohms change करने से अभी तो ब्रिज बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि अभी ये क्या है 440 400 400 400 ब्रिज बैलेंस नहीं होगा. तो ये ब्रिज को सॉल्व करना है. ये ब्रिज को सॉल्व करने के लिए क्या करना है बेटा? सो फर्स्ट दिस इज द 440 440 ये ब्रिज है ना. So first what I am doing, I am opening the terminals. I want to find out the current passing through the galvanometer, right? So I am opening the terminals. Sorry, supply इधर दिया ना. So we have given the supply here. So this is a supply. अभी बताइए. So this is our meter. I have opened this. So now what are the values? Tell me, my dear. What are the values here? This is 440. This is 400. This is 400. This is 400. ये कितना है? ये 10 volts है. ये 10 volts है. Am I right? So here आराम से आपको मीटर रेसिस्टेंस है, लेकिन अब मैंने मीटर को ओपन कर दिया. तो दिस द प्लस एंड माइनस हो गया. सो अभी क्या करना है जल्दी बताइए. आपने डेफिनेटली आपने वी थेवेनिन यूज करना है. यस सर. तो वी थेवेनिन कैलकुलेट करो बेटा. वी थेवेनिन कैलकुलेट करो उसका. ओके वी थेवेनिन कैलकुलेट करो. वी थेवेनिन कितना आएगा जल्दी बताओ. दैट इज द रीजन व्हाई आई नॉट गॉन फॉर द न्यूमेरिकल्स बेटा. मैंने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहता हूँ. महा रिवीजन बोलो तो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना. सो वी थेवेनिन क्या है? वी थेवेनिन इज इक्वल टू 10 into these two resistors are in series. These two resistors are in series. Okay, so 10 into this 440 by 400 plus 440, that is 840, minus these two are in series, so I can write 400 by 400 plus 400. तो कितना आएगा इधर? So this is 10 into this is 440 by this is 80 ना. sorry 440 plus 400 840 होगा, एंड दिस इज 400 by 800 होगा. कितना आएगा कैलकुलेशन करके बताइए जल्दी बेटा. आई एम वेटिंग फॉर दिस आंसर. वी थेवेनिन आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ. वी थेवेनिन का आंसर बताइए. नेक्स्ट क्या करना है? आर थेवेनिन को कैलकुलेट करना है. आर थेवेनिन क्यों कैलकुलेट करना है? मुझे करंट पासिंग थ्रू galvanometer चाहिए. सो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? तो दिस पर्टिकुलर ब्रिड्ज को मैंने क्या कर रहा हूं? इसमें शॉर्ट कर रहा हूं. I am shorting this supply. I am watching this resistance by opening these terminals. So अभी क्या होगा? ये 440 and this 400 and this 400 and this 400. अभी क्या होगा बेटा? आर थेवेनिन कितना आएगा? So these two are in parallel. So this 440, these two ends are connected here and these two ends are connected here. So this 440 and 400 in parallel, and this 400 and 400 in parallel na. Yeah. हाँ सर क्वेश्चंस मत कराइए. ओके चलिए दैट्स व्हाट. सो कितना आ रहा है? ये 0.238 वोल्ट्स आ रहा है. इस 0.238 वोल्ट्स आ रहा है. ये कितना आ रहा है? 440 400. ये आर थेवेनिन कितना आ रहा है जल्दी बताइए. 440 इंटू कितना आ रहा है? आई एम टेकिंग द वैल्यू 409. 409.52 आ रहा है. ओके so 409.5, that's it. So now if you see
if you see this concept now, this is a V Thevenin's, this is a R Thevenin's, and इसको मीटर सीरीज में आएगा. Understood now? So this is a meter. The meter resistance is 1000 ohms and इसका वैल्यू कितना है इधर 409.5 and V Thevenin's कितना है, V Thevenin's 0.238 volts है and we are going to pass on the current passing through meter, galvanometer current. galvanometer current कितना होगा, V Thevenin's by R Thevenin's plus RM होगा, that is 0.238 divided by 409.5 plus 1000 ohms. जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा. (1.6885 into 10 power minus 4 आ रहा है. 1.6885 into 10 power minus 4 आ रहा है. So that means 0.0168 microamperes आ रहा है. Okay. So what is the deflection sensitivity of the meter? The sensitivity of the meter कितना दिया है? अगर 1 माइक्रो एम्पेयर करंट गए तो कितना आ गया, आपको कितना डिफ्लेक्शन आ गया, 0.1 डिग्री आ गया. ओके, सो फॉर 1 माइक्रो एम्पियर वी आर गेटिंग ए डिफ्लेक्शन ऑफ 0.1 डिग्री, देन 0.0168 माइक्रो एम्पियर्स को कितना आएगा इंटू 0.1, सो यू आर गोइंग टू गेट 1.6885 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिग्री आ रहेगा. सो 1.6885 into 10 power minus 3. So this is the degree. Just a rough values I have taken. So with the rough values you're done. So these are the standard questions, my dear. These are the conceptual questions of the bridges. Okay, done. Chalo. Now let us move for the high resistance, my dear. Measurement of high resistance के लिए हमको क्या use कर रहे हैं, major concepts. Measurement of high resistance बोल दो greater than 100 kilo ohms. Please note down this value. हाई रेसिस्टेंस के लिए मोर देन 100 किलो ओम्स यूज कर रहे हैं, मोर देन 100 किलो ओम्स. तो उसके लिए क्वेश्चन है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड है, मेगर है, मेगर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बिट है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड मेगर भी है. ओके, दीज आर द ब्रिजेस. नाउ आई एम गोइंग फॉर द एसी ब्रिजेस, माय डियर. फटाफट हमने एसी ब्रिजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. यस, ओके, राइट 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 राइट, गुड. चलो, नाउ लेट अस डिस्कस द एसी ब्रिजेस, माय डियर. एसी ब्रिजेस में हमको पूरा कितना है, वी आर हैविंग द हियर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. जस्ट आई वांट टू गिव यू सम बेसिक आइडिया ऑफ दिस ब्रिजेस. दिस मैक्सवेल इज हैविंग टू कॉन्सेप्ट्स, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज. So these both are suitable for self inductance measurement. Case bridge is also for self inductance measurement. Owens bridge also for self inductance measurement. Anderson is also for self inductance measurement. DSRT bridge is for capacitance measurement. Sharing is for capacitance measurement. Wien's bridge is for frequency measurement. Okay my dear, ये ऐसे ब्रिजेस के ऊपर भी आपको बहुत सारा टाइम्स थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ चुका है. ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस को कैसे याद करना. Okay, so first let us go. And what are the detectors? The detectors definitely we cannot use the PMMC. Okay, why? Because here we are having the AC bridges, supply is AC frequency concept is there. So we are using the multiple detectors. पर 0 hertz DC के लिए हमने PMMC यूज कर सकते हैं. DC galvanometer को PMMC भी बोल सकते हैं. बट 2 to 100 hertz के लिए क्या है, वाइब्रेशन galvanometer है. 250 hertz to 4 kilo hertz है तो हेडफोन galvanometer. 10 hertz to 100 kilohertz है तो tunable amplifier galvanometer. इन द रेंज ऑफ मेगा hertz है तो हमने CRO की भी यूज कर सकते हैं. एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. अगर आपका आउटपुट ऑफ द ब्रिज इज इन द मेगा hertz, आउटपुट ऑफ द ब्रिज इज इन द मेगा hertz, आपने क्या यूज कर सकते हैं, आपने कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को यूज कर सकते हैं. ओके, तो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. थियोरेटिकल क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत है. फर्स्ट, ओके, ब्रिज का बेसिक कंडीशन क्या है.
AC bridge में basic balance condition है, not only the product of impedances but also there is another condition, their phase angles some should be balanced. Am I right or not, my dear? Their impedance angles also should be balanced. Two conditions must be satisfied. Don't think only the product of impedances, their phase angles also must be satisfied. Is it clear? Now let us move for the first bridge, that is, okay, before going to this Q factor, Maxwell bridge. My dear, Maxwell inductance capacitance bridge, this is suitable. These two bridges, Maxwell inductance capacitance bridge का basic parameter है कि ये क्वेश्चंस मैं समराइज करना चाहता हूं. आपको ये पूरा नोट्स मिलेगा, लेकिन आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं. इधर देखो, diagrams I'm not interested to show now, because anyway you can get the diagrams in the exam. In the exam he is going to get the bridge diagram and he is going to give some numerical question. That is not the matter. That question everybody can solve. But the point here is, I want to give some key important points. See, this particular Maxwell inductance bridge, these are suitable for self-inductance of the coil whose Q factor is medium. The Q factor is greater than 1 and less than 10. So, they are suitable for self-inductance measurement, but for the coils whose Q factor is medium Q factor. क्या है ये? Medium Q factor. तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, मैक्सवेल के लिए फर्स्ट लेटर M है. मैक्सवेल के लिए फर्स्ट लेटर क्या है? M है. सो वहां से आप निकल सकते हैं मीडियम क्यू फैक्टर. सिंपल, ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं आराम से. वेरी वेरी सिंपल. M फॉर मीडियम. सो मैक्सवेल बोथ ब्रिजेस आर सुटेबल फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल हुज क्यू फैक्टर इज मीडियम. हो गया आपको, सिंपल हो गया, क्लैरिटी आ गया. नेक्स्ट, हेस ब्रिज. हेस ब्रिज इज आल्सो फर्स्ट लेटर is H. So this is H, first letter is H. So this is also for self inductance measurement, but whose Q factor is greater than 10. Whose Q factor is greater than 10. So Q factor का वैल्यू क्या है? Higher Q factor. High Q factor. The first letter H and ये है H. So this is high. A for high. H, 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 H. Clear है बेटा? Excellent. These fellows, I think already excellent. Next, Owen's bridge. Owen's में Owen बोलो तो आप ऐसा रिमेंबर कर सकते हैं. This both, first let me talk about Anderson. This Anderson is also for self inductance measurement, and इसमें sun है. sun में last one है. sun में last one है. Okay, so that means it is suitable for Q factor less than 1. Q factor less than 1. So it is for lower Q factors, my dear. sun में 1, so it is for lower Q factor. मजा आ रहा है? Owen's bridge is also for lower Q factors, my dear. Owen's bridge is also for lower Q factors, but the point is it is suitable for incremental and decremental inductance measurement. Small minor increment and decrement, just 0.1 0.2 में चेंज हो रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए आपने ओवन्स में यूज कर सकते हैं. एक ऐसा रिमेंबर करना है, ओवन बोलो तो माइक्रोवेव ओवन, माय डियर. माइक्रोवेव ओवन में हम क्या करते हैं? माइक्रोवेव ओवन में हमने फूड प्रोडक्ट डाल के उसका टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं. इसकी वजह से हमको ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है. जस्ट लाइक ओवन में टेम्परेचर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते हैं ना, इन सिमिलर वे ओवन्स ब्रिज में इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल इंडक्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडरसन में ए है, A for accurate measurements, my dear. So this is for accurate measurements. This is for accurate measurements. मजा आ रहा है आपको?
Yes, yes, it is for mutual inductance. Campbell is for mutual bridge. Campbell is for mutual. Yes, sir. How many weightage for measurements? 8 to 2 marks. Jay Rathod, 1 to 2 marks minimum expected. But for instrumentation students, it will be 8 marks. For electrical students, it may not be 1 to 2 marks, I cannot say. But from the last couple of years, it is coming only for 1 to 2 marks. But for instrumentation students, it will be 8 marks. चलो, D-sorty and sharing, ये दोनों कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए है. ये दोनों कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए है एंड आल्सो डिसिपेशन फैक्टर के लिए भी है. डिसिपेशन फैक्टर के लिए है. लेकिन D-sorty में आपको डाउटफुल आएगा. शेयरिंग ब्रिज में सच है, शेयरिंग में सच है. सो शेयरिंग में सच डी फैक्टर आएगा, ट्रू डी फैक्टर आएगा. D-sorty में डाउटफुल आएगा. समझ रहे हैं आपको? D-sorty ब्रिज में क्या आएगा? D-sorty ब्रिज से हम कैपेसिटेंस मेजरमेंट कर सकते हैं और डिसिपेशन फैक्टर भी मेजरमेंट कर सकते हैं. सो D-sorty ब्रिज से आपको डाउटफुल डिसिपेशन फैक्टर आ रहा है एंड शेयरिंग ब्रिज से आपको सच डिसिपेशन फैक्टर आ रहा है. डिसिपेशन फैक्टर इज नथिंग बट 1 by omega CR, 1 by Q, sorry, 1 by Q. Q factor talks about energy storage capability. Dissipation factor talks about energy dissipation capability. वीन्स ब्रिज में फर्स्ट लेटर W है. W बोले तो ओमेगा है, ओमेगा बोले तो 2 pi f है. सो दैट इज फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट. सो इतना आराम से आप ये पूरा कॉन्सेप्ट को रिमेंबर कर सकते बेटा. मजा आ गया? मैंने इतना अच्छा हिंट्स दिया. ये हिंट आपने एग्जाम में यूज कर सकते. आप प्रीवियस गेट पेपर चेक कर सकते. हाउ मेनी टाइम्स मैच द फॉलोइंग वाज आस्क्ड? मेनी नंबर ऑफ टाइम्स मैच द फॉलोइंग आ चुका है. नंबर ऑफ टाइम्स लेफ्ट साइड ब्रिजेस दिया है, राइट साइड उसका एप्लीकेशंस दिया है. मैच द फॉलोइंग आस्क्ड. बताता हूं बेटा, मैं बताता हूं, सबको बताता हूं. मैक्सवेल इंडक्टेंस क्यू फैक्टर फॉर मीडियम. ओके चलो बेटा, आप कर लो. अरे सब मैं करे तो आप क्या करेगा? आप टेबल बना दो और सर्किल बना दो और पिरामिड भी बना दो. ओके मैं और एक चैप्टर को जा रहा हूं. आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट द डायग्राम्स ऑफ द ब्रिजेस. यस यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रिजेस डायग्राम्स. वो ब्रिजेस डायग्राम्स आप बाद में देख सकते हैं. एक एक ब्रिज का एक एक एप्लीकेशन है, एक एक डेरिवेशन है. ये no need to by heart these derivations. I don't suggest to follow the derivations. No need to by heart. In the exam, to use the basic concept of Z1, Z4 is equal to Z2, Z3. काम चल जाता है बस. यस यस, छोड़ दो उसको. उसके लिए पढ़ना, उसके लिए प्रैक्टिस करना नॉट रिक्वायर्ड. Next, most important concept I want to discuss, the energy meter. My dear students, in energy meter we are having some important formulas. Okay, in energy meter we are having certain important formulas. वो formulas मैंने आपको बोलना चाहता हूँ. Okay, energy meter में important formulas क्या है? तो basic important formulas मैं देखना चाहता हूँ. See, energy meter में बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आर हैपनिंग इन एनर्जी मीटर इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड. इट्स अ बेसिक रिलेशन. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो कुछ हैपनिंग इन एनर्जी मीटर, दे आर प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी कंज्यूम्ड. सो दैट इज व्हाट द एनर्जी मीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट. एनर्जी बोलो तो क्या है? एनर्जी इज द इंटीग्रेशन ऑफ पावर ओवर ए टाइम. इंटीग्रेशन ऑफ पावर ओवर ए टाइम, that is integration of power, V into I means power over a time, that is the energy. Okay, so energy meter का fundamental concept क्या है? The number of revolutions happening in energy meter are directly proportional to the energy consumed. This proportionality if you remove, you are going to get some constant called energy meter constant, so K into E, my dear. Got it? Sir, Q factor of bridges discuss कर दो. अरे
कॉस्मॉस आप बाय हार्ट करने की चांस नहीं है। ब्रिडजेस का क्यू फैक्टर वाई और बाय हार्टिंग, व्हाट इज द टेस्ट कंपोनेंट, द टेस्ट कंपोनेंट का इंडक्टेंस, टेस्ट कंपोनेंट का रेसिस्टेंस आने के बाद आप डायरेक्टली एग्जाम में क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा एल बाय आर निकल सकते। So K is the energy meter constant, that is N by E. This N is the number of revolutions. So units क्या होगा? The units क्या होगा? Units will be revolutions by kilowatt hour होगा, revolutions by kilowatt hour होगा. This energy is also most important thing, energy is equal to power into time होगा, so power is equal to VI cos phi into time होगा, okay, VI cos phi into time होगा. So उसको हमने क्या करना है, ये VI cos phi को डिवाइड करना है 1000 से, so that आपको किलोवाट्स आएगा, एंड टाइम को डिवाइड करना है 60 into 60, so that seconds will be converted into hour. This is a most important conversion factor. So please remember, the most important conversion factor क्या है इधर, converting them into kilowatt hour, most important है, kilowatt hour आएगा. So this energy units are kilowatt hour. So revolutions per kilowatt hour is the fundamental point of the constant. Yeah. And one more thing I want to tell you here, we are expecting इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, if you see the construction of energy meter, in the construction of energy meter we are having एक M shape magnet है. This M shape magnet को we are having the potential coil, we are having the potential coil like this, and ये है हमारा डिस्क, एल्यूमिनियम डिस्क which is attached to the spindle. एक मिनट भैया, मैं एक बात करता हूँ.
See here. Why? Because just I want to show the diagram that otherwise you cannot get the idea. So this is a diagram. This is a basic diagram of energy meter. yes. देखो अभी clarity आएगा आपको. So this is the diagram. So in energy meter we are having the shunt magnet, a M-shaped magnet. To the M-shaped magnet we are having the pressure coil. So this is our pressure coil, my dear. So this is our pressure coil. Okay, and there is a U-shaped magnet. एक U-shaped magnet भी है. U-shaped magnet we are attaching the current coil. So this is the current coil, my dear. So and this is a C-shaped magnet. So the three magnets. One is the M-shaped magnet, other one is the U-shaped magnet, other one is the C-shaped magnet. For M-shaped magnet we are having the pressure coil. For the U-shaped magnet we are having the current coil. So here comes the pressure coil. So this is a pressure coil, my dear. So यहाँ से आपको एक प्रेशर कॉइल का फ्लक्स एक्ट हो रहा है एंड यहाँ से आपको करंट कॉइल का फ्लक्स एक्ट हो रहा है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द फ्लक्सेस we are going to get some relation. So what is the most important point here I want to tell you here is the next second. So here we expect I want to talk about the error. That is an important concept. So this is our pressure coil current and this is also the flux due to the pressure coil. If the pressure coil is purely inductive, my dear, if the pressure coil is purely inductive, its inductance will be, its voltage across the pressure coil must be like this. Yes or no? If it is purely inductive, ये क्या होना है? So its voltage across the pressure coil must be like this. It is purely inductive. Am I right or not? See, this is one important concept. Energy meter में एक important concept है. If the pressure coil is, see this diagram. If the pressure coil is purely inductive, for an inductor, voltage leads the current. Voltage leads the current. So this must be 90 degrees. Okay. And what about the current coil? So this is our current coil component. So this is our current coil. So here the most important point here is basically this one, pressure coil is not purely inductive. Yes or not? Pressure coil we cannot expect purely inductive nature. All of your understanding? But हमारा syllabus में यही है ना, हमारा सिलेबस में डिजिटल एनर्जी मीटर नहीं है. या see here. So this is our, because of the inductance effect, so listen, this is our IPC and IPC. So this what angle? This angle is called delta, my dear. So this is the point I want to tell you. This angle is equal to delta. Okay. So we expect when the delta is, actually what is the true power? The true power is equal to VL IL cos phi. Am I right or not? This is a true power. But when it comes to the measurement value, the measurement value क्या है? Measurement value क्या होगा? Measurement value is equal to VL IL. This is, we are going to get a sine of delta minus phi. Please note down this point. This is what? Sine of delta minus phi. Where is this delta? This delta represents the because of the pressure coil inductance. Pressure coil is not purely inductive, it is having some resistance effect.
Somebody was asking in the beginning, pressure coil should be purely inductive or purely resistive. We expect the pressure coil to be purely inductive, but because of it's not purely inductive, it is having some resistance effect. We are not getting the complete 90 degrees, we are getting the angle as delta. So because of that, we are having a measurement value sin delta minus phi. Okay, what is that phi? This phi is the power factor angle, right? So this is the phi. So if you take this power, this one, this is the current passing through the current coil and its flux. So this particular thing, this is phi. Okay, so what I mean to say here is this particular thing is going to have some error. So this is the error creation. So when if delta is equal to 90 degrees, what happens? If delta is 90 degrees, what happens? The measurement value of the power and the true value of the power will be same. Okay, but when that is possible, Gajendra Singh, are you there? Dear students, Gajendra Singh, are you there? You are asking the pressure coil must be purely inductive or purely resistive, or it should be resistive effect more or inductance effect should be more, you are asking, right? Yeah, this is the answer. So what is this delta? This delta is the angle created because of the pressure coil's error, pressure coil inductance effect. So please make a note of this point. So now what I want to do here, I can deploy an equation. This n is proportional to k into n is proportional to E, right? That means n is equal to k into E, right? So n is equal to k into E means energy is equal to power into time, right? So power means what? This measurement power or true power? True power क्या है? True power में क्या आ रहा है आपको? So that is Vi cos phi into time आ रहा है. This is for n1. But practically क्या आ रहा है? Practically we are not getting cos phi, my dear. We are getting the sine of delta minus phi. Am I right or not, my dear students? This is the most expected question. This is the most expected question here. How many have understood? So this one is creating an error. So this is the true value and this is the measurement value. So there are two errors in the measurement of power and in the measurement of the speed. So there is a speed error. Am I right or not? So if delta is equal to 90 degrees, then okay. If delta is equal to 90 degrees, when pressure coil is purely inductive, if pressure coil is purely inductive, beta, if pressure coil is purely inductive, क्या होगा? Delta will be equal to 90 degrees. Then the N1 will be equal to N2 होगा. Do you understand this logic? It is the most important concept in the energy meter. In the energy meter diagram, if you see, because of the interaction of the flux coming from the pressure coil and flux coming from the current coil, because of these two fluxes interaction, we are going to get some torque. The resultant torque will be proportional to the power consumed. Okay, but this power is dependent on this pressure coil inductance. If the pressure coil is not purely inductive because it is having some resistance effect also, then the phasor diagram says that according to the phasor diagram, we are going to get the formula as delta minus phi. How many of you understood this concept? This is the most expected question, my dear. So there is a conceptual question in the energy measurement and in the speed measurement. Okay. So percentage error क्या है इधर? Percentage error is the measurement value minus true value by true value into 100 होगा here. Okay. And here percentage error क्या होगा? Here percentage error क्या होगा, my dear? Here percentage error is equal to in speed measurement value of the speed minus true value of the speed by true value into 100 होगा. So ये एरर को डिक्रीज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? ये एरर को डिक्रीज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? ये एरर को डिक्रीज करने के लिए ये डेल्टा को मैंने 90 डिग्रीज करना है. This delta has to be made 90 degrees. This delta has to be made 90 degrees means that energy meter का pressure coil जो कुछ है, pressure coil must be pure inductive. Am I right or not? ये समझ रहे हैं आपको? जितने लोग सेशन को देख रहे हैं, आप एक बार एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स को रिसर्च कर लो, आपको ये आइडिया आएगा. मैं एग्जाम में जो बिट्स आने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूं. So most important concept here is energy meter में error elimination due to pressure coil inductance effect. ये pressure coil is not purely inductive, it is having some resistance effect.
वो रेसिस्टेंस की वजह से क्या होगा, हमको फेज एंगल 90 डिग्रीज नहीं आ रहा है, डेल्टा हैज टू बिकम 90 डिग्रीज. सो दिस angle must be 90 degrees, my dear. This particular angle must be 90 degrees. Then we are going to get that. So 90 degrees कैसा होगा, अंटे उसका इंडक्टेंस इफेक्ट बढ़ना है. उसका इंडक्टेंस इफेक्ट बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, we are going to add the shading bands, copper shading bands we are adding here. So these are the copper shading bands. So we are adjusting this copper shading bands, we are attaching to the pressure coil. When this pressure coil is attached with this copper shading band, क्या होगा, इंडक्टेंस का इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है. अगर इंडक्टेंस का इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, देन डेफिनेटली क्या होगा, प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस बढ़ जाएगा. यस, you understand? This is one error expected. And the other error is, sometimes even though there is no current passing, so because of some residual concept, there is a slow movement of the disc. So उसको हम बोलते हैं creep error बोलते हैं. So when the current passes, what happens, in addition to these creep rotations, some extra rotations are also going to come. So actually rotations have to come N1, but already it is under creep rotation. So this creep rotation is going to be added, because of the speed variation will be more. Okay, so that is also an important point. See here. So energy meter में आपको concepts कैसा समझ में आया, energy meter में आपको कैसा आएगा concept, listen carefully. energy meter में आपको some questions करेंगे, so that आपको clarity आएगा. Please solve this question फटाफट. Why? Because most of all the cases energy meter में simple questions आ रहे हैं, देखो ये फटाफट कर सकते हैं. A single phase energy meter is operating at 230 volts. V is given as 230 volts. Frequency is given as 50 Hz. With a load of current 20 amperes. Time is given as 2 hours. Power factor is unity. Cos phi is equal to 1. The meter takes 1380 revolutions. N is equal to 1380 revolutions. The meter constant K is dash. कैसा कैलकुलेट करना है? So N is equal to K into E, my dear. So K E calculate करो पहले. So first E को calculate करो. E is equal to what? Vi cos phi into time. Am I right or not? Why? Because energy meter में simple questions आएगा. Simple questions को miss मत करना. Vi cos phi into time. So what is V here? V is equal to 230 volts. Current is equal to 20 amperes. Cos phi is equal to unity, but इसमें kilowatts में आना है, उसके लिए 1000 डेरिवेट करो. And time is equal to 2 hours. So time already hours में दिया है, so 2 से multiply करो, kilowatt hour हो गया. That's it. So कितना आएगा energy? Energy का आंसर कितना आ रहा है? 230 into 20 into 2 divided by 1000. कितना आ रहा है? 9.2 kilowatt hour आ रहा है. 9.2 kilowatt hour आ रहा है. So K is equal to N by E. So that means 1380 revolutions divided by 9.2 kilowatt hour. उसको simplify करो, आपको आंसर मिलेगा. Am I right or not? Yeah, 1380 divided by 9.2 करो, आपको आंसर कितना आ रहा है? 150 आ रहा है. 150 आ रहा है. Okay, yes. So here my एक question को दिखाता हूँ. Why? Because some of the questions of energy meter are interesting. Yeah, please try to answer this. एक question देखो. In a single phase, this is not signal, it's a single. In a single phase induction type energy meter, the lag adjustment is done to ensure that. मैंने बोल रहा हूँ आपको. So this is our pressure coil. Connected to the M-shaped magnet. उसके लिए हमने copper bands adjust कर रहे. So these are some copper bands we are adjusting. We are moving these copper bands to the up, so that the inductance effect is going to be increased, so that the completing flux due to pressure coil is increasing. But listen, the question asked here is, why you are doing this adjustment? Current coil flux lags supply voltage by 90. See, this is the flux, or this is the current passing to the pressure coil.
the reason for this flux passing the pressure coil is the current. Now this we are expecting the voltage in the pressure coil must be 90 degrees. This is not happening. This is happening, right or not? This is what we are getting. This is what we are getting. 5 pc we are coming here. So this is the reason. उसको adjustment करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? So what is the answer for this? Here it is not due to the current coil. First of all, ये answer को eliminate कर सकते हैं. Pressure coil flux lags the apply voltage by 90. Pressure coil flux is in phase with the apply voltage. Current coil is not at all answer. Pressure coil flux is in phase with apply voltage. No. Pressure coil flux lags the apply voltage by 90 for ideal. Am I right or not? You understand, my dear students? ये concepts आप understand करने की कोशिश कीजिए. शुभम, is it clear? चलो, जितने लोग सेशन देख रहे हैं आपको कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे? या ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन फटाफट. देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्रीपिंग एरर है. क्रीपिंग एरर किसकी वजह से आ रहे हैं मैं बोल दिया आपको. whenever a small current is entering, whenever zero current is entering also, because of certain residual effect, the disk will be having slow rotation. These slow rotations will be added when actually current enters, so the net rotations will be increasing. So here the disk of a house service energy meter of 230 volts, so V दिया है 230 volts, single phase, frequency 50 Hz, current is equal to 5 amperes, and K is given as 2400 revolutions per kilowatt hour. Creep set 1 revolution per minute. creep rate कितना दिया है? creep rate दिया है 1 revolution per minute. that means 1 मिनट में आपको कितना आ रहा है? 1 रिवोल्यूशन में जा रहा है. 1 मिनट में आपको 1 रिवोल्यूशन जा रहा है. Suppose if you are maintaining for per hour, why? Because when nothing is given you can take for hour. So for 1 hour that means 60 minutes. For 60 minutes कितना आ रहा है? 60 revolutions आएगा. Okay, right? So these 60 revolutions are expected if there is no current passing also. No current passing also आपको 60 revolutions expected है. So now what is the N actually we are going to get? First energy calculate करो. Energy is equal to VI cos phi into time, my dear. So V कितना दिया है? V दिया है 230 volts. Current दिया है 5 amperes. Cos factor दिया है unity power factor. When time is not given, you can take time as hour. Okay. So you have to convert this into 1000. So you are going to get 3600. So this take 3600. So when nothing, when nothing is given, you can directly take the hour. So this is kilowatt hour हो गया. कितना आ रहा है? चेक करो, जल्दी बताओ. वन 1.15 किलोवाट आवर आ रहा है. 1.15 किलोवाट आवर आ रहा है. तो अभी स्पीड कितना होगा? स्पीड इज इक्वल टू सॉरी 3600 ऐड करो यार. 3600 कितना आ रहा है? चेक करो. एक सेकंड. ओके. टाइम विल टेक 1 आवर. 1.15 किलोवाट आवर आ रहा है. 1.15 किलोवाट आवर से हमको एन कितना आएगा? 1.15 इंटू 2400, 2760 आ रहा है. सो एन कितना आएगा अभी? एन इज इक्वल टू के इंटू ई. तो के कितना है? 2400 रिवोल्यूशंस पर किलोवाट आवर. एंड एनर्जी कितना आ गया?
1.15 किलोवाट आवर. So ये कट हो जाएगा. So this will be cut. So you are going to get as 2760 revolution. But remember my dear, yeah, kilowatt में convert करना है. This is Shubham here. Actually time is not given, means by default you can take 1 hour. If time is not mentioned, don't take seconds. You can take it as 1 hour. Generally energy is consumed per hour. So hour. And we have to convert this into watts to kilowatts ना. Watts to kilowatts convert करने के लिए मैंने 1000 ले रहा हूँ. Is it clear? Watts to kilo 2760. जितने लोग सेशन को देख रहे हैं आप कनेक्ट हो रहे नहीं बेटा, जितने लोग सेशंस को देख रहे हैं आप कनेक्ट हो रहे नहीं, प्लीज रेस्पॉन्ड मी. सी ऑलरेडी ये डिस्क है ना, एनर्जी मीटर में जो कुछ डिस्क है ना, वो डिस्क इज ऑलरेडी हैविंग इनबिल्ट हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, 60 रिवॉल्यूशंस. एक घंटे में कितना रिवॉल्यूशंस है? 60 रिवॉल्यूशंस. अभी करंट 5 एम्पियर जाने की वजह से एक्स्ट्रा कितना रिवॉल्यूशन आ रहा है? 2760 रिवॉल्यूशन आ रहा है. सो व्हाट हैपेंस नाउ? What happens now? Tell me. So it is already is having 2760 revolutions is coming because of the current and 60 revolutions are because of the creep. So the total कितना आ रहा है? So measurement value कितना आ रहा है? So these are the due to current, 5 amperes current जाने की वजह से, and these are due to creep. Am I right or not? So पूरा कितना होगा? 2820 revolutions होगा. But दिस इज द मेजर्ड वैल्यू है, बट एक्चुअल वैल्यू कितना बेटा? एक्चुअल वैल्यू कितना है? एक्चुअल वैल्यू 2760 रिवॉल्यूशन ओनली ना. दिस इज विदाउट क्रीप माय डियर. दिस इज इंक्लूडिंग क्रीप. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? So this is what we call creeping error. So percentage of creeping error कैसा आएगा? Percentage of creeping error बोलो तो measurement value minus true value by true value into 100 आएगा. So आप सिंप्लीफाई करो, आपको आंसर मिलने की चांस है 2820 माइनस 2760 डिवाइडेड बाय 2760 इंटू 100. तो कितना आ रहा है? %2.17 आ रहा है. दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. दिस इज व्हाट आई मीन क्रीपिंग एरर. Because of small rotations in the disk, my dear, already some creeping error present. This is the most important question. मजा आ गया बेटा? So this is what the session. Okay. तो मोस्टली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब कुछ मैंने डिस्कस किया हूं. आप CRO एंड क्यू मीटर डीवीएम के लिए आप मेरा पूरा वन शॉट सीरीज और प्रीवियस PYQ सीरीज को सर्च कर लो. ओके. अभी आपको और एक सेशन आने वाला है 7 बजे को. सोनू लाल गुप्ता सर का EMFT सेशन है. तो सोनू लाल गुप्ता का डबल लोगों के लिए है, वो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए. सो मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ. हाँ नितेश जी, अभी 7 बज रहे हैं ना, आप कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं बेटा. 7 PM को और एक सेशन स्टार्ट करने वाला है. टाइमिंग 7 PM में था ना. अभी तो आप यही ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन है. इंस्ट्रूमेंटेशन का कितने बच्चे इधर? Power electronics is by Ajay Gupta sir. Power electronics is by Ajay Gupta sir. Okay, my dear.
Okay. Thank you, thank you. Sure. ब्रह्मा इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन मैं प्लान करूंगा ये 4th 5th के बाद प्लान करूंगा, अभी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। 4th 5th को, फरवरी 4th 5th को डबल ई सीरीज है ना, डबल ई का ईसी का एग्जाम चल रहा है ना, तो गेट एग्जाम होने के बाद हम प्लान करेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन का 11th को एग्जाम है ना, अभी तो पूरा टाइट है शेड्यूल। चलो एक बार आप सेशन को लाइक करो, आपका वैल्यूएबल कमेंट्स डालो इधर। आई एम वेरी हैप्पी फॉर वाचिंग दिस सेशन। ओके, सो आई एम क्लोजिंग द सेशन माय डियर। चलो बाय।